अस्सलामुअलैकुम, हार्दिक स्वागत। 19वें मुकाबले का इस समय टॉस का समय सिक्का उछाला गया और देखना होगा किसके पक्ष में आएगा। उमरान नंबर जीडी टाइटंस के कप्तान एक बड़ा शानदार ये मुकाबला रहने वाला है क्योंकि
Assalamu alaikum. Welcome to the virtual quarter final. The team which will win today will advance to the next stage. The team which will lose this one, they will be having no chance to progress in the tournament. And look at Umar Alam. He's in a hurdle. He's having a chat with his boys there. All looking forward to this must-win clash, must-win game. The real Sultan Summerbugh. Umar Alam won the toss and he inserted Global Dadoo Titans into bat. And the two batters for Global Dadoo Titans, they're out in the middle. The two officials are very much in readiness. One is Balbinder Kumar Soni. He's got Ravi Kumar Chaurasia. It's a cool evening and a coolish one this evening here at Bakshi Stadium. And captain along with his troops dispersed out. They were in a short hurdle. Global Dadoo Titans, it's a must-win game. They have their openers out in the middle. In the later part of this game, we shall come to know how things will unfold. But let's see who's going to operate with new ball. Looks like the captain is going to carry on and continue. He believes in himself and his capacity, the techniques, the ability he possesses, he has. Fazil Rashid is going to be the wicket keeper for the real Sultan Summerbugh. Tajamal Baba is playing. Nasir Ghanai is there. There is Yashjeet in the line of Vijan Panchal. And there is Hinan Malik, Sajjad Ghanai, Amir Sofi, Sajadar. These are the lads in the lineup. These are the players who find their place in the playing 11. That's important thing. If you find your place in the playing 11, that means you have something. You have a kind of a ray and that glimpse that attracts the selection committee and the management, and that provokes the selection committee that this one, you have to pick this one for this game. And it's the big moment and it's the big game coming up. The man of the big moment, the captain himself, is going to be the force to reckon this evening. But that remains to be seen where he's going to pitch it, what kind of length he's going to bowl. And on the other side, if we talk of the two openers, it's Sarshil Abbas again with Irfan Mir. Irfan yet to announce himself in the tournament. On the other side, Sarshil is also struggling. He has found it hard to find a way, and that we call get going. He's yet to open up a bit in this tournament. What will he do this evening here? Must win for both the teams. It's a tight one. Do or die. Now or never. It's not about 2 points. It's about that race to make it to the Super 8. Which side will prevail? Which one will be in the Super 8 stage of the tournament? Umar Alam to bowl, the ball number 1 of the match. This is match number 19, day number 11. Here we are at Bakshi Stadium from Southern Pavilion, and captain goes away from us. Inside the line, keeps it to mid-off. Yashjeet is there, directed it is. Straight away something that will keep both the teams on their toes. It was a good return, but they're not going upstairs yet. I think he's home. He's safe there. It's Irfan Mir on that occasion. With the shot, he walks away for a quick single. With the shot, he's off for a walk. Good running there. And Yashjeet with a direct hit, but unable to find him short of his ground there. It's Irfan Mir. He makes a crease with ease on that occasion. For a while, I thought that this one is going to be a close one. But in the end, it was Irfan who was well inside the crease. No problem there. And this replay will confirm for you guys how he made it to the crease. The next one worked away nicely. I thought it will be a replay, but that is still far away. Next one is a good shot. Wide of the man at mid-wicket. They're going to look for 2 here. First ball single, second ball double here. It's 3 for none in over number 1. Well, captain has decided to bat first. They will love to chase this evening here. Well, we have seen that chase has never been easy. When it comes to the tournament, entire tournament, we have found that chase has been a tricky. And even early this evening, what we saw, that they lost the match by the barest of the margins by just 1 run. And it's 3 for none after 2 balls in over number 1. I got Nazir in the com box. It's welcome, Nazir. धन्यवाद. अस्सलाम वालेकुम. स्वागत. दूसरा मुकाबला पहली पारी. द रियल सुल्तान समरबुग टॉस जीतने के बाद सीधे गेंदबाजी करने का निर्णय लिया. आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए ग्लोबल डडू टाइटंस को.
सरशील और इरफान मीर ने शुरुआत की बल्लेबाजी में, और सरशील का बल्ला अब तक इस प्रतियोगिता में बोला नहीं है। आज आवश्यकता है उनके बल्ले से कुछ रन देखने को मिले। और वहीं पे इरफान ने कुछ छोटी छोटी पारियां ज़रूर खेली है, पर आवश्यकता यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों को एक ठोस शुरुआत, एक मजबूत आधारशिला प्रदान करने की। जीडी टाइटंस को 4 बगैर नुकसान के उमर आलम शुरुआत कर चुके हैं गेंदबाजी में। 19वां मुकाबला जेके सुपर सीमेंट प्रीमियर लीग 2025 सेकंड एडिशन। और ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है जेके स्पोर्ट्स टाइम के ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से, साथ में रेड एफएम जेके प्रायोजक जेके स्पोर्ट्स टाइम के शाइनिंग स्टार पापा और एचएम फैशन पिस्ता एंथम स्पोर्ट्स इंडिया जस्ट बुक और हमदान और कैंसल गेट स्पोर्ट्स क्लब एचएनडी, और उसके अलावा वैली फ्रेश कोल्ड चैन। चलिए सिंगल मिलता है, एक बार फिर स्टंप्स पे जा टकराई गेंद, पर वहाँ सुरक्षित पहुंच चुके हैं क्रीज में। और अतिरिक्त जोखिम से बचना ज़रूरी, क्योंकि यहाँ पे आपको चाहिए कि आप एक सही और सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करें, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक अच्छी शुरुआत आपको देनी ज़रूरी, वो शुरुआत जो आपको पावर प्ले में मिले, एक ठोस आधारशिला प्रदान करनी है, तो फिर आप उससे बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। पर दूसरी पारी में चेज करना ये थोड़ा अलग प्रकार का निर्णय है, पर उनके पास क्षमता है। उमर आलम ने सीधे वहाँ गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। शायद उनका विचार ये होगा कि दूसरी पारी में वो बेहतर तरीके से चेज कर सकते हैं, अगर पहली पारी में कम से कम लक्ष्य तक रोके। बड़ा स्ट्रोक सीधे नासिर गनाई से क्या छोटा, और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। नासिर गनाई वहां पे थे जरूर लॉन्ग ऑफ पे, गेंद उनके हाथ में आई और फिर छिटकी और सीमा रेखा से बाहर निकल गई। खराब फील्डिंग, तो कैच को लपक लेते नासिर गनाई तो यहां पहला विकेट मिल सकता था। पर प्रदर्शन करना जरूरी, बेहद जरूरी। ये 19वां मुकाबला, मात्र एक मुकाबला बचा है। अगर लीग मुकाबलों की हम बात करें, वो कल आखिरी लीग मुकाबला खेला जाएगा पूल ए का, और ये पूल बी का आखिरी मुकाबला। लीग मुकाबला और पूल ए का लीग मुकाबला कल संभवतः। ठोस शुरुआत, वो बेहतर शुरुआत चाहिए। यहां दोनों बल्लेबाजों को इरफान मीर और सरशील पास। सरशील को जीवन दान मिला, नासिर गनाई ने कैच छोड़ा लॉन्ग ऑफ पे। उमर आलम इस ओवर में अगली बार, इस बार कट खूबसूरती के साथ गैप में, और गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए चौका मिलता हुआ। और क्या बढ़िया बल्लेबाजी, ये शॉट बहुत बेहतर था। आत्मविश्वास आएगा इस खिलाड़ी का, वो आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से रन आने रहे उनके बल्ले से। सरशील की मैं बात कर रहा हूँ, और सरशील को फॉर्म में लौटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से इसका ज़रूरी है। और ऐसे में इस शॉट जो है, यानी कि इरफान मीर की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो कुछ पारियां ज़रूर खेल चुके हैं, पर सरशील को फॉर्म में लौटना ज़रूरी जीडी टाइटंस के लिए, ग्लोबल डाडू टाइटंस की टीम। और निश्चित तौर पे ये एक तोहफा ज़रूर, एक चुनौती ज़रूर, और इस चुनौती को स्वीकारना आज सरशील को। सरशील की अगर हम बात करें, एक बेहतरीन बल्लेबाज है, थोड़ा सा समय लेना होगा, विकेट के मजाज को परखना होगा, अपने आप को सेट करना ज़रूरी है, यार सामने कुछ रन बनाने ज़रूरी है, तो तभी जाकर के आपकी टीम जो है एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकती है। फिलहाल एक अच्छा और बेहतरीन मुकाबला। पहला ओवर अभी तक समाप्त हो, दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। साजिद डार नए ओवर लेकर के तैयार, और साजिद शुरुआत करेंगे गेंदबाजी की। ये दूसरा ओवर द रियल सुल्तान समरबुग के लिए, और काफ़ी महत्वपूर्ण मुकाबला, ये दिलचस्प मुकाबला, आकर्षक मुकाबला, और यहाँ से जीत आपके पक्ष में, तो फिर आप सीधे क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेंगे। और यहाँ से हार, जो भी टीम यहाँ से हार कर सामने आएगी, तो हार जिसके पक्ष में जाएगी और वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। तो ऐसे में अवश्य है, पहले ओवर की गेंदबाजी समाप्त हो चुकी है। 1 ओवर 13 रन, सरशील 11, इरफान मीर लारा 2, और उमर आलम का ओवर समाप्त हो चुका है। साजिद डार का इस्तेमाल दूसरे छोर से पहली गेंद लेकर के, इस बार खूबसूरती के साथ क्लाइंग के दम पे फ्लिक किया गया, मैं चौका मिलता हुआ बड़े आत्मविश्वास के साथ। उतने ज़्यादा ऊर्जा का संचार नहीं किया था, लेग साइड में ये गेंद थी। 4 रन जरूर बटोरे यहाँ पर इरफान लारा ने। इस चौके के साथ रन संख्या में वृद्धि, और रन संख्या में वृद्धि होती है 13 से बढ़कर 17। 1.1 ओवर की गेंदबाजी द रियल सुल्तान समरबुग के सामने जीडी टाइटंस, ग्लोबल डाडू टाइटंस की टीम। और एक बड़ा लक्ष्य खड़ा करना है, बेहतरीन लक्ष्य खड़ा करना है, तो फिर सामने से रन बनाने ज़रूरी है। शुरुआत में एक मजबूत आधारशिला प्रदान करनी ज़रूरी। अगली गेंद साजिद की, इस बार अतिरिक्त उछालती पर खूबसूरती के साथ,
गेंद पे अंतिम समय तक नजर रखना ये कला है इस खिलाड़ी की। 1 रन और खाते में 18, 1.2 ओवर की गेंदबाजी 18 बगैर नुकसान के। सरशील 11, इरफान 7, साजिद 5 रन अभी तक उन्होंने दिए हैं, 2 गेंदें उन्होंने फेंकी हैं। ये दूसरा ओवर साजिद का, यहाँ आपको ठोस शुरुआत चाहिए, मजबूत आधारशिला प्रदान करने होंगे 2 बल्लेबाजों को। 18 बगैर नुकसान के 1.2 ओवर की गेंदबाजी। नासिर गनई ने वो कैच छोड़ा और अब जाकर के साजिदार सामने से अगली गेंद लेकर के तैयार। अच्छी गेंद थी, ऑन साइड में एक सिंगल मिल जाएगा। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है वहां पर मिडॉन दौरा। दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था सिंगल लेने का। अच्छी बल्लेबाजी अब तक, क्योंकि जानते हैं अच्छी शुरुआत मिल चुके हैं। पहले ओवर में 13, इस ओवर में 6, 19 आ चुके हैं 1.3 ओवर की गेंदबाजी में। और निश्चित तौर पर अगर जिक्र करें तो बेहतर शुरुआत देनी होगी, बेहतर आक्रमण करना होगा, वो ज़रूरी भी है इस समय टीम को। थैंक यू, धन्यवाद आपका। और इन चीज़ों पे भी आपका सोच विचार ज़रूरी है। आपका ध्यान जब केंद्रित होता है तो निश्चित तौर पे हमारा ध्यान भी वहाँ से आकर्षित हो जाता है। तो ये चीज़ सफलतापूर्वक ज़रूरी है जो आपने कार्य किया। थैंक यू मनोहर भाई। 19, 1.4 के बाद इरफान लारा 7 पे, सरशील 12 पे। 5 गेंदें अभी तक सरशील ने खेली हैं और 12 रन ने बनाए हैं। शौकत मैडी जो कि 3rd अंपायर इस टूर्नामेंट के, ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार। इरफान सामने और साजिद अगली गेंद लेकर के इरफान के लिए स्टंप्स को कवर किया, सामने की ओर खेले और अपने ही फॉलो थ्रू में फील्ड कर लिया। अच्छी रणनीति। 1.5 के बाद 19। थोड़ा सामने सीधे बल्ले से खेलना ज़रूरी। डडू टाइटंस की अगर हम बात करें, जी डडू टाइटंस की अगर हम इस टूर्नामेंट के मुकाबलों की बात करें तो ग्लोबल डडू टाइटंस ने 2 मुकाबले हारे हैं, 1 जीता है। और वहीं पे सुल्तान वाले समरबुग ने भी 2 मुकाबले हारे हैं और 1 जीता है। ये तिरछे आड़े बल्ले के साथ गैप में गई है गेंद, पर पीछे फील्डर हैं। इस बार नासिर गनई से कोई गलती नहीं हुई। चूक पहले हुई थी पर इस बार चूक नहीं होगी, सिंगल मिल जाएगा। अंतिम गेंद पर ओवर की हो गई समाप्ति। 2 के बाद 20 ग्लोबल डडू टाइटंस बगैर नुकसान के। The pair in the middle trying to put on a show. Thereafter fly 20 for none, going 10 and over. A good one for batting unit. They would have wanted a start like this as they're 20 already on the board. A chance gone down. I wasn't part of that event. What went wrong with Nasir Ganai on that occasion? I was trying to fix other things. He has spilled one earlier on, and Sarshil on to 12. He's got Irfan Mir batting on 8 of 7 balls. Fresh over outside edge found. It dropped short of slip fielder. Irfan steal a single. It's 21 on the board in over number 3. Global Dadoo Titans. Bit off color in the tournament. The real Sultan Summerbugh. Such a packed side. Losing 2 games in this event. Who would have thought that they will go down? But right now they need to win this one. Likewise, Global Dadoos. They don't have any other option. Sarshil is eyeing some big shots here. He feels cagey at times. Applying yourself, those applications, adapting to the conditions, that's important thing. Well, Sarshil, it has been a shaky tournament. It has been a tough one for Sarshil Abbas. He struggled in the entire event. 22 for none. We are into the 3rd over of inning number 1. This time, Irfan. Little away there from body and gets 1 for that. 23 for none. First 2 was yielded 20. And they're pretty happy with that kind of a start. They needed runs. And already 23 coming.
There is a man at long off, no one at long on. Mid on is up inside. He's got a man at backward of square fence to control that pull shot of Sarshil Abbas. Now Sarshil is trying to work it away. He's helping it on its way to fine and square leg area. He's eyeing that fine leg and the square leg. And this time he's got the protection there. Umar has got all the basics covered and cleared. He knows that Sarshil will try to pull the ball sometimes to use that foot movement. And he's trying to overcome that. That's a good adjustment. The experience he's got. And to trouble the two men in the middle, that's so nice. It is hard to find a way to trouble these two lads when it comes to the aggression and intent. They both are meant for aggression and intent. And that's a beautiful delivery outside, off there and moving further outwards, and is surprised by that outswing delivery. Umar Alam. The new ball is going to move. The new ball is going to move under lights, which is evident and visible. Right now you can see that ball is moving. Ball is doing a bit. Irfan, he has to control his nerves here. It can be a nervy earlier on, but once you get your eyes in, we have seen that batters find it easy to score runs on these pitches. That is a good shot, and that's gone all the way for a 6. Over point boundary, and over number 3 comes to an end. It's 30 on the board. A 6 of the final ball. It's 30 for none after 3 overs. And Irfan Mir will feel at ease. And there is a message for Irfan Mir. They know that how important Irfan Mir is. And he's known for some settler innings. And his contribution is always important. When he contributes, it's going to be substantial. Here is Sajid with the fresh over. That's little uppish and aerial, but it's gone wide of the man there, down to the third man. The better thing about Sarshil and Irfan Mir, they are rotating strike. Rotation is going on. It's a right and left hand combination. As a righty and lefty, when you rotate strike, you make the other side, the fielding unit, tired, and you don't let them settle down a bit. They have to rotate each and every ball. So dots are going to be important here. Dots will definitely affect the flow. He's surprised with that one. He's going to have a word with his counterpart there. I think there is a message for the two batters. Not just on a mission here, but they're given a kind of a mission. They have to work on that strategy here. They need to strategize when the ball is keeping low, how to adjust, and where to excel and where to attack. That's why Irfan is going across and having a word, telling his partner, what should I do now on a very next ball? Should I go and attack? Or is it better to stick to the basics? Look, that's a solid block again. And before mid-off can come in and stop. And can't prevent that single. One more run taken, 32. I was talking about the two batters in the middle. They're just trying to work on the basics at the moment. And they know that that odd one, the bad ball, is going to be there in play, where they can excel and they can express themselves to their level best. It's 32 as we are in over number 4. That's aerial and uppish. This time he's going to find the boundary.
with ease, and it's a no ball. So with that boundary, there is addition to the tally. Watch that again. He picks the length right and dispatched it straight away to long offense. What will he do now? We're still going through the replays, how he managed that one, how he put that one away. The fresh over begins with a boundary. It's a free ball coming up, full toss. Where is this one going? Man is going after the ball. Will he be able to stop it? No way. It's into the fence again. That is the second boundary of the over. Free dispatched. Batter is having a word with strike umpire there. He's telling him that, is it a legal delivery? Is it a okay? Is it a fair ball? He believes that it's above waist. He's still having a word with square leg umpire. And looks like that square leg umpire believes it's okay, it's fine there. 41 for none. Two boundaries coming. No ball and then free. Both balls dispatched for boundaries. Again a quality shot of the bat of Sarshil Abbas, driven straight to mid off. He's going to pick one here. Well, that's good cricket from Sarshil and Irfan Mir at the moment. Sajid started this tournament on a good note, but in the middle of the tournament we have seen the game number 3 and this is their 4th game. He has lost his rhythm a bit. He has to mend his lines. He's lacking that line at length. This is the high time to improve that. Bring a change, and he has to do that right now. And that's a good shot again. Good field. And he saved 3 runs for his team. Wicket Panchal. Hop stop, but effective. 42 for none after 4 overs. They're going shade over 10 and over. The two batters for Global Dadoo Titans. A chance gone begging. What we saw in 4 overs. Plenty of boundaries coming. A no ball there. And a drop chance. As of now, Global Dadoo Titans are dominating the show. Irfan Mir and Sarshil Abbas. Irfan 17, Sarshil 24. Sajid 2 was none for 19. Umar Alam, he's gone for runs here. Economy is telling you the story. How many runs were scored against the likes of Sajid and Umar Alam. Is he gonna look for change here? Looks like Yajit has been given the ball. He's given the role to remove one of the batters here. They're gonna go with a spin. An option that has worked on these two pitches, which are being used for JK Super Cement Red Premier League Season 2, presented by Athwas Retail. Athwas with confidence. Look at the name, Global Dadoo Titans. Such a big name. On the other side, it is the real Sultan Summerbugh. Both teams need to prove their mettle this evening. It is an occasion. It's the time they have to prove that their mettle. They have to prove themselves. Who is the real Sultan Summerbugh and who are the Global Dadoo Titans? As both the teams are going to find it tough tonight. It's going to continue till late into the night. Long way to go. We have 16 overs to come from inning number 1 and 20 overs remaining from inning number 2. Okay, 5th over is about to start. Yashjeet will operate. There is a man at long on. Mid off up inside. Just 2 men allowed to stay outside. And the two batters are doing well at the moment. And Yash pushing Sarshil Abbas out of the crease there. He was looking for the ball and is telling him that
You have to stay a bit wide. Look at that one. Sarshil was surprised at why he's pushing me. He pushed him there. It's 42 for none. Yes, he has been effective. He has bowled really well in the tournament. But that's a cracking shot. That's Irfan Mir for you. We're just talking about that Yash has been effective this season. And he bowled that super over somewhere in South Kashmir where he defended 8 runs in an over. You can understand that. The intensity of that game. And this man with cool nerves. Look, it looked like that he's got the ice in his nerves. 46 for none. That one, no, that's a good looking shot. Behind square on the on. Will this one run away to the boundary? Oh, it's stopped on its own. It did tease a bit. But fielded as well. He decided that I'm off to the ball and I won't give up. Stops the ball in the end. It's 48 for none in over number 5. Restrictions are on, and I got Nazir in the com box. It's welcome again, dear Sheikh Nazir. धन्यवाद मुनव्वर। 48 बगैर नुकसान के। पार्टनरशिप बहुत बढ़िया अभी तक 2 बल्लेबाजों ने निभाई है, सरशील और इरफान ने। थ्रो लीजिए या रन आउट के रूप में। सरशील को वापस जाना पड़ेगा, दूसरे की मांग थी पर काफी दूर रह गए क्रीज से सरशील। अब्बास थ्रो सीधे फील्डर के पास और उन्होंने कोई भी गलती नहीं की और सीधे स्टंप्स पे दे पा रहा। और इस प्रकार से यहां देख लीजिए ये थ्रो और वहां पे, जी हां, सरशील काफी दूर रह गए। पहला विकेट ग्लोबल डाडू टाइटंस ने गंवाया 48 पे। 1 रन तेजी के साथ पूरा किया था, दूसरे की मांग थी पर यहां थोड़ी जल्दी करनी पड़ी सरशील को, पर वो पहुंचे नहीं और रन आउट के रूप में मैदान से बाहर जा रहे हैं। इरफान सुरक्षित पर विकेट खोया। सरशील का निराश कदमों के साथ वापस, निराश हताश ये चेहरा इस बात की पुष्टि करता हुआ। सरशील ने 24 बनाए, 13 गेंदों का सामना किया और 49 पे संभवतः ये विकेट मिला। 49 पे पहला विकेट गंवाया है ग्लोबल डाडू टाइटंस की टीम ने। द रियल सुल्तान समरबुक को अंततः रनआउट के रूप में ये विकेट मिला 5वें ओवर में। पर अच्छी शुरुआत, बेहतर शुरुआत इन 2 बल्लेबाजों ने। लाइन और लेंथ को मेंटेन करना जरूरी और उसके अलावा सही दिशा और लंबाई पे नियंत्रण जरूरी है। अब वो लाभ लें विकेट से। अगर विकेट में कुछ नहीं है तो फिर आपको अपनी कला, वो अपनी प्रतिभा का 100% इस्तेमाल करना जरूरी है कि ये विकेट थोड़ा बेहतर बल्लेबाजों के लिए। कुछ गेंदें पड़ने के बाद नीचे रह रही हैं, कुछ अतिरिक्त उछाल लेकर के विकेट कीपर की और कुछ बेहतर पुल शॉट के लिए, कुछ खूबसूरत कट शॉट के लिए। तो कुल मिलाकर एक अच्छा क्रिकेट अभी तक देखने को मिला है। अथर्व काले गजब के फॉर्म में ये बल्लेबाज, कमाल के ये खिलाड़ी। अब सामने अथर्व काले, वो पिछले मुकाबले में बेहतरीन पारी, उससे पूर्व मुकाबले में बेहतरीन पारी, गजब के फॉर्म है और एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं जीडी टाइटंस के अथर्व काले। 49 पे 1, 5वां ओवर, ये पहली पारी, 19वां मुकाबला इस टूर्नामेंट का, इस प्रतियोगिता का। एक मुकाबला मात्र बचा है लीग की अगर हम बात करें। पूले का मुकाबला, सोपोर स्टैलियंस का मुकाबला सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के साथ। सीधे हाथ में लीजिए, इरफान मीर भी वापस और सीधे वहां पे थमा दिया तजम्मुल बाबा को। ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर थे, ड्राइव किया था पर कवर के खिलाड़ी को भेद नहीं पाए और शानदार कैच लपका और सफलता मिलती हुई यहां पर यशजीत को। इरफान मीर थोड़ा जगह बना करके शफल किया लेग साइड में, पर सीधे तजम्मुल बाबा के पास और यशजीत का ये सेलिब्रेशन कमाल का। दूसरा विकेट, पहले सरशील रनआउट के रूप में और इसी ओवर में
अंतिम गेंद पर अपना विकेट भी गंवाया इरफान ने। 24 बनाए 19 गेंदों का सामना किया, 49 पे 2। ये क्रिकेट की खूबसूरती। पिछला मुकाबला स्टैलियन से 1 रन से हारा, यहाँ 49-0, 49 पे पहला, 49 पे दूसरा 5 ओवर की समाप्ति। अथर्व काले ने आबाद है और रियल सुल्तान समरबुक को दूसरी सफलता मिलती हुई ये सफलता दिलाई। यशजीत ने कैच पकड़ा, तजम्मुल बाबा ने 2 चौके 1 छक्का 24 बनाए और वापस मैदान से बाहर। और अब नंबर 4 पे इम्तियाज लेफ्टी। अच्छे बल्लेबाज हैं पर पूरी तरह से उनका बल्ला बोला नहीं है। जे के सुपर सीमर रेड प्रीमियर लीग के इस दूसरे एडिशन में जीडी टाइटंस के लिए कुछ बेहतर प्रदर्शन करना होगा। 5 ओवर 49 2 विकेट, यह है लेखा जोखा अब तक इस मुकाबले का। पर एक अच्छा क्रिकेट खेलना जरूरी, यहाँ से एक बार फिर पार्टनरशिप की आवश्यकता आन पड़ी। पर अथर्व काले बेहतरीन बल्लेबाज है, एक खूबसूरत शानदार और क्या लाजवाब खिलाड़ी अथर्व काले। अथर्व साझेदार नए ओवर लेकर के 2 ओवर में 19। अच्छी गेंद थी इस बार, स्लवर 1 का इस्तेमाल और गति को थोड़ा कम किया और चतुराई के साथ ये गेंदबाजी होती हुई। हालांकि जो उपेक्षा कर रहे थे कि अच्छी खासी गति पे ये गेंद आएगी, अच्छी लेंथ पे आएगी, पर ऐसा हुआ नहीं और उन्होंने गति को थोड़ा कम किया, ये जानते हुए कि सामने अथर्व काले वो किसी भी स्ट्रोक के लिए तैयार रहते हैं और पहले से प्रतीक्षा में रहते हैं। उनके विरुद्ध चतुराई से गेंदबाजी करना जरूरी। साजिदार को 49 पे 2। 6वां ओवर पहली पारी। रियल सुल्तान समरबुक बनाम ग्लोबल डाडू टाइटंस 19वां मुकाबला इस टूर्नामेंट का। 5.1 ओवर की गेंदबाजी। इस बार पड़ने के बाद फिर नीचे रहती, थोड़ा हल्का सा सरकाव था। एक बार फिर गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के 2 डॉट गेंदें साजिदार की। अथर्व काले को खाता खोलना बाकी। इम्तियाज लेफ्टी ने भी अभी खाता नहीं खोला है और कुछ बातचीत के लिए ज़रूर गए हैं अथर्व के पास। ये थोड़ा सा संयम रखिए, आत्मविश्वास रखिए, आत्मविश्वास की ज़रूरत है यहाँ, जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। 49 पे आप 2 विकेट गंवा चुके हैं तो कहीं ना कहीं इस दबाव से निकलना, एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी है तो फिर एक दूसरे को पढ़ना ज़रूरी है, या गेंदबाज को पढ़ना, विकेट को पढ़ना ज़रूरी है। ये लीजिए, क्रीज छोड़कर बाहर निकले ज़रूर थे, बड़ा स्ट्रोक खेलने गए थे, पूरी तरह से बीट किया। 30 गेंद थी, अच्छी लेंथ पे फेंकी हुई गेंद साजिदार के और सीधे विकेट कीपर के पास एक स्लिप, जहां पे उमर आलम है। ये तीसरी डॉट गेंद इस ओवर में और खूबसूरत गेंद। गेंद की पिच तक पहुंचने का प्रयास असफल, संपर्क नहीं हुआ, रन भी नहीं मिला यहाँ पर अथर्व काले को। 3 गेंदें खेली हैं, दबाव होगा बल्लेबाज अथर्व पे। 49 पे 2, 5.3 के बाद आत्मविश्वास की जरूरत। ये अच्छा स्ट्रोक है पर सीधे आमिर सोफी के पास रन नहीं मिलेगा। आमिर सोफी भी एक बेहतरीन दिग्गज खिलाड़ी है, अनुभवी खिलाड़ी है और 4 डॉट गेंदें और डॉट से बचना होगा। अब गैप में गेंद को धकेलिए, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना जरूरी है। दबाव आएगा जब आप सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट नहीं कर पा रहे हो तो फिर दबाव बल्लेबाजों पर। शिकंजा कसा इस ओवर में साजिदार ने। 49 पे 2, 5.4 ओवर की गेंदबाजी। ग्लोबल डाडू टाइटंस एक और डॉट गेंद। जी हाँ, सामने फील्डर हैं, जब तक शॉट मिड ऑन सही खिलाड़ी हिनान मलिक आकर के गेंद को फील्ड करते। रन संख्या में कोई नहीं। 5 लगातार डॉट गेंद इस ओवर में, पूरी तरह से अंकुश लगा है इस ओवर में अथर्व काले पे। 49 पे 2, 5.5 ओवर की गेंदबाजी के अंतिम गेंद का आना बाकी। आखिरी गेंद हो गई इस ओवर में। क्या ये मिड इन ओवर समाप्त होगा साझेदार का, ये देखने वाली बात होगी। इस बार गैप में गई है गेंद, चौके के लिए सीमा रेखा से बाहर। और पिछली 5 लगातार डॉट गेंद, इस बार ऑफ स्टंप पर जरा सी विट क्या मिले, टूट पड़े अथर्व काले और गेंद को सीधे बॉर्डर लाइन से बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक साझेदार के बाद गति का इस्तेमाल किया। ये खूबसूरत शानदार स्ट्रोक अथर्व काले का 2 खिलाड़ियों के बीच में से, कवर और पॉइंट के बीच में से गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। चौका मिलता हुआ अंतिम गेंद पर चौका, ओवर की हो गई समाप्ति। 6 समाप्त 53 पे 2। अथर्व 4, इम्तियाज लेफ्टी 0। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। 3 में 23 साझेदार और ये ओवर बहुत बेहतर रहा। 5 डॉट गेंदें और आखिरी गेंद पर चौका, वो खूबसूरत कमाल का शॉट था अथर्व काले का और उन्होंने खाता भी खोल लिया। 53 पे 2। इम्तियाज लेफ्टी सामने 0 पे, अथर्व 4 पे। यशजीत का एक बार फिर इस्तेमाल। 1 ओवर 7 रन 1 विकेट।
यशजीत ने मात्र एक सफलता अर्जित की है और एक विकेट रनआउट के रूप में सरशील का विकेट। इम्तियाज लेफ्टी पहली बार सामना करने के लिए यशजीत का उनके कंधों पर दायित्व है, उस दायित्व को निभाना है। यहाँ बेहतर बल्लेबाजी, अच्छा क्रिकेट खेलना दोनों टीमों को। इस बार बैकफुट पर जाकर के सम्मान दिया सामने सीधे बल्ले से। अच्छी रणनीति, अच्छी मानसिकता, एक बेहतरीन सोच इस बल्लेबाज की। 53 पे 2, 6.1 के बाद 7वां ओवर। एक बार फिर गेंद की पिच तक पहुंचने का प्रयास। खूबसूरत अंदाज से इम्तियाज लेफ्टी जानते हैं यहाँ अतिरिक्त जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा समय जरूर लेंगे। तो गेंदबाज को पढ़ना, विकेट को पढ़ना है और अतिरिक्त जोखिम से बचना है। थोड़ा सा वो एक कॉन्फिडेंस मिल जाए, वो स्ट्रोक बेहतर खेल सकते हैं। इस बार गैप में गई है गेंद, पीछे फील्डर साझेदार ने गेंद को फील्ड कर लिया। सिंगल मिल जाएगा, इम्तियाज लेफ्टी का खाता खुला। रन संख्या 54, 2 विकेट पे 7वें ओवर की गेंदबाजी। अथर्व काले 4 सामने हो गए। काले एक स्ट्रोक लगा चुके हैं, आत्मविश्वास उनका लौटा होगा क्योंकि पिछली 5 डॉट गेंदें, फिर आखिरी गेंद पर वो चौका बटोरा था। कमाल का वो शॉट था अथर्व काले का। और अथर्व काले गजब के फॉर्म में है। पिछले मैचेस में अगर हम बात करें तो अच्छी पारी उन्होंने खेली है, बहुत ही बेहतरीन पारियां उन्होंने खेली है अपनी टीम जीडी टाइटंस के लिए। यशजीत बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज, एक सिंगल ऑन साइड में खेल करके अथर्व काले और इम्तियाज लेफ्टी ने पूरा किया। 55 पे 2, 7वें ओवर की गेंदबाजी। ये काफी महत्वता है इस मुकाबले की। ये पूल बी का आखिरी लीग मुकाबला है। यहां से जीत तो आप क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेंगे और यहां से हार तो आप इस टूर्नामेंट से बाहर। कल आखिरी मुकाबला होगा, वो आखिरी लीग मुकाबला होगा और न सिर्फ वो आखिरी लीग मुकाबला बल्कि पूल ए का वो आखिरी लीग मुकाबला भी होगा। खूबसूरती के साथ आमिर सोफी की ओर धकेला पर रन नहीं मिलेगा क्योंकि वो काफी मुस्तैद है वहां पर, सतर्क है वहां पर। और फील्डिंग के साथ ही उन्होंने थ्रो किया सीधे विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। 55 पे 2, अंतिम गेंद का बाकी 7वां ओवर। यशजीत इस ओवर में 2 रन खर्चे हैं। 1.5 ओवर 9 रन 1 विकेट। कमाल की गेंदबाजी विश्लेषण, बेहतरीन गेंदबाजी। बख्शी स्टेडियम ऐतिहासिक मैदान, जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025 मिड ऑफ की ओर खेल करके रन पूरा कर लिया है इम्तियाज लेफ्टी और अथर्व काले ने। अंतिम गेंद पर रन आया, 7 समाप्त। 56, 2 विकेट के नुकसान पे द रियल सुल्तान समरबुक के सामने जीडी टाइटंस की टीम। यशजीत ने 2 ओवर में 10 रन 1 विकेट। और जेके सुपर सीमेंट प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस दोबारा से अपने अंदर लाना है तो फिर आप बेहतर बल्लेबाजी कर पाएंगे। शानदार प्रतियोगिता और हर एक टूर्नामेंट की अपनी अपनी महत्वता। किसी भी क्षेत्र में आप कोई भी टूर्नामेंट खेल रहे हैं, चाहे वो लीग बेस्ड टूर्नामेंट हो या नॉकआउट बेस्ड टूर्नामेंट हो, तो एक अपनी इंपॉर्टेंस है और अपने अपने स्तर पे मैं समझता हूँ वो ऊंचा स्तर उस टूर्नामेंट को मिला है, वो किसी भी स्थान पे हो। तो रेड प्रीमियर लीग ने भी एक ऊंचा स्तर अभी तक प्राप्त किया है। बहुत ही बेहतरीन सफलता के द्वार खोलती हुई है टूर्नामेंट। फिलहाल 56 पे 2, 7 के बाद। मनोवर आपका स्वागत है एक बार फिर। Thank you very much. 2 for 56. Atharva Kale and Imtiaz lefty. It's a fresh pair in the middle. Both openers gone. Sophie begins the fresh over. One of the top performers for the real Sultan Sumerbugh in the tournament. He's one of them who's hitting the purple patch in the tournament. 2 for 56 off 7 overs. This is 8th over. We saw a single coming. That means there is addition to 56. It's 57 now. Atharva Kale. A night where he can improve. A night where he can make his name, but he's unable to do so. He's given out LBW to Amir Sofi and Atharva Kale departs. I was just talking about that. A night where he's going to make an MR. Will he be able to make a mark? But it is Amir Sofi. He has sent him packing back to pavilion, given out LBW. So wicket number 3 down, partnership broken.
A little stay, a short stay in the middle, and is sandpacking. That brings new batter in at number 5. Atharva is given out LBW. He's having a word with Dardish Goni, and Goni is walking into the middle. He strolled out to the center as they are 3 down now. Amir Sofi finds a wicket on his very first ball. It was the second ball of his over. The very first ball for Atharva Kale, where he's found right in front. As I was talking about, I thought it out earlier on that Atharva, he can prove his mettle. It is the high time. It's the big stage. It's the big game. A must-win clash. But he's gone so early, falling cheaply. And Amir Sofi once again doing what he's known for, as captain brought him, and it brings a wicket. Dardish, he has a new style. He has his own way of scoring runs. You can see that how he's scoring runs. A batter loves to use that extension of arms, free up his arms, try to up the sleeve and go big. But this lad, Dardish Goni, you can see that he's locking his arms, then going big and hard, wide and long. You're going to see if he gets his eyes in tonight. You will find out yourself what he's capable of and how he's batting in his own yard, in his own manner. He's got a different fashion, and the style comes tons. That one is soft hand. Vision can't stop that single. That's the beauty of Dardish. He's so quick. He's going to show that agility. Sofi's having a little smile on his face. Bowling with that side arm action, and lefty is still there. And Imtiaz lefty. There is going to be that pressure on his nerves here. It's a precious game. You win, you are in contention, you are alive, you're breathing. You lose, you have to pack bags and wait for the next season. That's going to take another 9 or 10 months. Or we can say around a year to be back here. Shores of and the beautiful sight, the elliptical venue of Red Premier League, that is the Bakshi Stadium. 60 for 3 after 8 overs. Over number 9 is about to start. Vision has got the ball in his hand. Now look how Amir Sofi bowled that over. A tight one to start with, 1 over just 4 of it. Setting an example for others to come in and bowl like me. Or just try to replicate. Are they going to follow that pattern? Will they disturb the batters? What the batters will do now? Will they be caged? Are they going to break free? Hinan. It's Fazil Rashid who's keeping wickets, not Hinan Malik. And Fazil whipped up the bails. He dislodged the bails. As Dardish is getting ready to face the next one. Vision. With a vision in his eyes. He will try to keep things tight. On the other side, the batters need to find a way. They need to score runs and keep rotating. That's very much important. That will keep their boat afloat and going. In a kind of a tricky situation right now, as the ball is troubled the batters. Earlier on we saw a kind of a flyer. Then in the middle overs we saw wickets coming. 3 of them gone back to hut. Another cheeky single. Good cricket from Imtiaz lefty and Dardish Goni. They are just trying to reconcile here. Resurrection continues. In that process we saw the back of Atharva Kale. He couldn't resist. And it was Amir Sofi who removed that wicket. The much important one.
The next one, good delivery again as he keeps it away, but that was a well directed one from Vijan, trying to york him on that occasion, and does well with that one. This is 9th over we are in. Vijan is rotating his fielders after each and every ball. He's got the right and left hand in the middle. Now credit to Vijan, he's also adjusting here again as the likes of Imtiaz and Dardish. There is a long off and long on for Imtiaz, and that one goes for the slog hit. That's aerial, that's uppish, and it's going down to the backward of square boundary for 4. It low bit off for a while. I thought it went up straight away, but it got that thick edge and it flies. Oh, it's come up the queue end in the end. And fielder was interested for a while. He's shown some interest, but it was way away and gone in the gap for runs, 4 of them. A boundary they needed. A crucial 4 coming. 3 for 67. 9 overs done. 9 के बाद 67 3 विकेट पे इम्तियाज लेफ्टी और दर्दिश गोनी एक साझेदारी का प्रयास करते हुए, और पिछली गेंद पर वो खूबसूरत स्ट्रोक था, चौका मिला वहां पर इम्तियाज लेफ्टी को। आमिर सूफी ने अपने पहले ओवर में 4 रन और अथर्व काले को चलता किया। बहुत बड़ी सफलता मिली। काले जो कि गजब के फॉर्म में थे, बेहतर बल्लेबाजी पिछले मुकाबलों में की थी, पर आज वो खास योगदान नहीं दे पाए। एक सिंगल, दोनों बल्लेबाज संतुष्ट होते हुए सिंगल से 10वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। आधा सफर गेंदबाजी में समाप्त होने जा रहा है 10 ओवर के साथ ही। आमिर सूफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ये उनका दूसरा ओवर है। 5 रन देकर के 1 विकेट 1.2 ओवर में 68 पे 3। JK सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। आज पिछले मुकाबले में अथवास ने मात्र 1 रन से जीत अर्जित किया, अथवास इंडिया ने, और उन्होंने पराजय किया था वहां पर सोपोर स्टैलियंस की टीम को। और इस दूसरे मुकाबले में जो डे नाइट मुकाबला, दिन रात्रि का मुकाबला इस समय खेला जा रहा है, अंडर लाइट्स पहली पारी चल रही है। आज उमर आलम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। इस बार बैकफुट पर आकर के स्ट्रोक खेला, पर कवर्स में खिलाड़ी तैनात, रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। 69 पे 3। दर्दिश गोनी, खूबसूरत स्वीप, शानदार तरीके से, कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर, चौका मिल जाएगा 4 और खाते में। बढ़िया स्ट्रोक था, 4 जरूर मिले और रन संख्या पहुंच गई 73 पे। आमिर सूफी के विरुद्ध, और दर्दिश की ये क्षमता है, वो बेहतरीन बल्लेबाज हैं। एक बड़ी पारी वो खेल चुके हैं इस मैदान पे, अनुभव उनके पास बहुत ज्यादा, और उस अनुभव का प्रयोग करते हुए इस मैच में जीडी टाइटंस के लिए 73 पे 3। आखिरी गेंद इस ओवर की सामने खेला, दौड़ पड़े सिंगल के लिए और तेजी के साथ वो रन भी पूरा कर लिया। 1 रन और ओवर की समाप्ति 10 के बाद 74। 3 विकेट पे दारदीश और इम्तियाज लेफ्टी। एक पार्टनरशिप वो जरूरी भी है और उसको सफलतापूर्वक निभा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। जीडी टाइटंस के लिए 10 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 74 बने हैं 10 ओवर में। 148 प्रोजेक्ट स्कोर। अगर आप वर्तमान रन गति 7.40 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाते रही टीम। फिलहाल 10 ओवर की समाप्ति, ड्रिंक्स ब्रेक ले लिया गया है।
Welcome again after that drinks break in the middle. Vijan is getting ready. Ahmed 2 was 1 for 11. Imtiaz 10 of 13. It's 10 apiece. Dardish and Imtiaz lefty, both into the double figures. Pressure first ball. Driven straight. Call is for 2. Nasir Ghanai is quick on to the ball there. It isn't easy to take any undue risk when there is Nasir Ghanai. Yeah, he dropped earlier on, but that doesn't mean he's not agile. He's in a good field. He's a wonderful all-rounder. You can't take any undue risk, but that one, it's aerial. It's into the night sky, onto the rooftop. Monster, 6 more. Coming up the bat of Imtiaz lefty. Vijan overpitched that one. He was waiting for that delivery. Right underneath the ball, and it goes all the way. Vijan again. This time plays it onto the offside. Cover point, there is a possibility of a single. A few loose balls here could undermine the bowler's confidence. And that one keeps it away to offside. Not for runs. A look of Fazil Rashid and Dardish having fun there. They're enjoying their time in the middle. 82 for 3. Once again, Vijan. Oh, good delivery. Rightly directed one. Dardish does well. Keeps it somehow away. And he's going to pick one more here. Well, these runs are going to be crucial and important. Vijan. Looking at his field. Now he's getting ready. Something is cooking. He's thinking over something, and that one, it's another closer. Into the night sky again. And that's gone into the grandstand in the end. What a hit. And something that was cooking inside his mind and body, that all of a sudden disappeared with that towering 6. It's come up the bat of Imtiaz lefty. The second one of the over. Two sixes coming, and Vijan gone for 22 of his 2 overs, and this over it was expensive. The first one, that was a tight one. That was a good one. But this over it's gone for plenty. He conceded 2 big shots here, 2 big hits. And both deposited beyond the boundary cushion there. Imtiaz moves to 23 of 16. Dardish on 12. Ahmed has got the ball again in his hand. Look, Dardish is doing well at the moment. Gentle dab. And they're going to pick the second run here. Overthrows from Vijan as he fired it in. Ahmed Sofi unable to stop the ball. He was eyeing a direct hit. But it goes on to the other side. Hopefully there is a man backing up to cover it up. 91 for 3. Soft handers again. Gently done again. Good cricket, smart cricket. Look, there is no pressure at the moment. They're just trying to keep that pressure away. Not letting the bowler settle down a bit. As Ahmed Sofi has that knack, he can break free again. But batters are trying to rotate. That's a good cricket. This could be tight again. But not a good stop. Not a clean one. That quick single will bolster the run rate significantly.
They need to dry up these singles. Another quick single taken. Dardish and Imtiaz. They're sharing a stand here. Sharing is simply caring. They care for their club and they know that how important this win is going to be. This game will keep their hopes alive in the tournament. The side which will prevail at the end of the day, they will walk away with 2 invaluable points and they will buy the ticket for the Super 8 stage of the tournament. 3 for 94. Amer is keeping it simple and tight. He's bowling really well at the moment. Dardish isn't happy. He's disgusted with his counterpart. He wanted another single here as this over yielded 5 of 5 balls. First ball brace, then singles and a dot delivery. This time that's gone in the gap, but the man will come across to stop the ball. Just a single. 6 runs coming off the over. It's 12 gone, 95 for 3. Bowlers, they can't afford loose deliveries here. That could undermine the bowler's confidence here. $95 for 3. Short pause again. Imtiaz is trying to fix his shoelace there. And with this, he's going to get hydrated. He will remain hydrated. As 8 overs are going to come. The remaining 8 overs are going to be exciting and entertaining too. Let's hope for the best. A real fight between two teams. It's of great importance. This is the 19th game of tournament and it's day number 11. Tomorrow is going to be the final league round robin game coming up your way. Sultan Warriors Baramulla and Sopor Stallions will fight it out here. And that is going to be the day-night encounter coming your way. 3 for 94 after 12. Nasir pressed into service. Captain brought him into the attack. Good running between the wickets. Decent cricket is going on. And the action continues in the middle. Little attendance. Still in good numbers. To watch match number 19. Dear beloved listeners and viewers, it's of great importance. Oh, that's aerial, but it's in the gap in the end. That's into the wide of extra cover for 4. Anything loose, anything short. He's going to pounce on. The boundaries start to proliferate. As the batsman finds his rhythm, Imtiaz is finding that rhythm in today's game. Will he continue with that Sam attack? It's 100 up. Oh, that one, it's aerial. Who's going to take this? Who's going to take this? And it's taken by Hinan. It's a big fish. It's a huge success. One massive caught in the net. That to Imtiaz lefty. As lefty was just trying to take on. Now he was trying to break free and trying to find boundaries. He was finding boundaries at will. This time round, there is Hinan. He says, no more. And he takes it in the end. A good catch. Under lights isn't easy, but he does well. Settling underneath the ball. Good catch. Much needed one to bounce back. That brings Wasim Raza. He comes out to bat at number 6. Before walking away, he had a word with Wasim. I think telling him that it's now up to you.
take that responsibility. All the listeners and believers believe that you are a batter of huge caliber. You know how to absorb the pressure and when to go for the big. And you can tire the opponent side with ones and twos. Imtiaz lefty. Certain rush of blood. Bit hurry. Had he stuck to basics for next 3 overs, around 15th over, that would have given Wasim Raza and Dardish a license to go for the full Monty. An opportunity to grab, and it would have been an attacking final phase. But now they need to reconcile again. Repair the damage caused by Nasir Ganai by picking that important wicket of Imtiaz lefty, who left early, scoring invaluable 30 plus, and then left to the crease. Next one, it's going down towards the backward a point. Chase for the fielder there. Just a single. Hundred and 2 for 4. Last ball of over number 13 is coming up. Nasir finds a wicket in this over. The important one of Imtiaz lefty. Dardish will face the last ball from... Oh, that cheeky! That is so quick and gently done. But look at the fielder. Look at the effort in the deep. He does well to stop the ball. It was a gutsy from batter. Brave from fielder. Keeps it down to 2. End of over number 13. 104 for 4. You are watching JK Sports Time Facebook. Moreover, it's live on JK Sports Time YouTube and Red FM JK. Tomorrow, Sultan Warriors taking on Sopor Stallions. To buy the ticket, to avail it, log on to www.district.in and you're going to find a ticket to seek berth in the stadium for next game. 104 for 4, 13 done. We got Nazir in the com box. It's over to you. धन्यवाद मनवर. वसीम रजा 1, दरदीश गोनी 18-16 के दूसरे 104 पे 4, 13 समाप्त, 7 ओवर का खेल बचा है पहली पारी में। और आमिर सोफी आखिरी ओवर अपने कोटे का 3 ओवर में 17 रन खर्चे हैं। ये उनका आखिरी ओवर होगा। पहली गेंद हल्के हाथों के साथ उसको ड्राइव किया, ऑफ साइड में दौड़ पड़े वहां पर दोनों बल्लेबाज और सिंगल पूरा कर लिया। वसीम रजा में क्षमता है, दरदीश गोनी जो कि 18 पे 16 के दूसरे, पर वसीम रजा और दरदीश गोनी एक बेहतर साझेदारी निभा सकते हैं। वो क्षमता इन दो बल्लेबाजों में है और उस क्षमता को यहाँ पे बेहतर तरीके से प्रयोग में लाना होगा गेंदबाजों के विरुद्ध। रियल सुल्तान समरबुग 4 विकेट प्राप्त कर चुके हैं उनके गेंदबाज। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर, ये गेंद थोड़ा बाहर निकलते हुए स्वीप करना चाहते थे पर गेंद तक पहुंच नहीं पाए क्योंकि पड़ने के बाद बाहर की तरफ सर की गेंद और ऐसे में वहां कनेक्शन नहीं हुआ। हालांकि वाइड की मांग थी दरदीश गोनी की अंपायर से, पर अंपायर ने उसको स्वीकार नहीं किया। ऐसे में रन संख्या अभी भी 105 4 विकेट पे और 2 गेंदें अभी तक हुई हैं। फिलहाल ग्लोबल दादू टाइटंस एक बेहतर स्थिति में, क्योंकि इसके बाद अभी भी कुल मिलाकर 7.4 ओवर का आना बाकी, 6.4 क्षमा कीजिएगा, 6.4 ओवर की गेंदबाजी का आना अभी भी बाकी है। अरे जिक्र करें तो कोशिश ज़रूर होगी 160 170 तक पहुंचने की, और कोशिश में सफल क्या हो पाएंगे दरदीश गोनी, वसीम रजा और आने वाले बल्लेबाज जीडी टाइटंस के। सलीम मीर अच्छे स्ट्रोक खेल सकते हैं, गवर रशीद में वो क्षमता है बड़े स्ट्रोक खेलने की। आपके पास विकल्प है बल्लेबाजी में, पर यहाँ
ये वो समय है जहां से आपको कुछ आक्रामक शैली से बल्लेबाजी करनी, और वसीम रजा पे वो क्षमता। दरदिश गोनी बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं, वसीम रजा भी वो क्षमता रखते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों बल्लेबाजों में वो काबिलियत है और कोशिश जरूर होगी। पर गेंदबाजों का प्रयास होगा कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा विकेट प्राप्त किया जाए और रन गति पे अंकुश लगा जाए। एक बार फिर स्वीप करने का प्रयास, और स्वीप बहुत बढ़िया खेलते हैं दोनों बल्लेबाज, चाहे वो वसीम रजा हो चाहे उनके साथी खिलाड़ी हो। 105 4 विकेट पे 14वां ओवर वर्तमान में। आमिर सोफी आखिरी ओवर अपने कोटे का, और क्या किफायती गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी उन्होंने की। अब तक 18 रन दिए हैं। एक बार फिर नीचे रहती गेंद, थोड़ा वाइड ऑफ द ऑफ रखने का प्रयास, ऑप्शन से थोड़ा बाहर रखने का प्रयास, क्योंकि जानते हैं वसीम रजा के रेंज में गेंदबाजी करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर कोर्ट स्टंप आउट की अपील और थर्ड अंपायर को रेफर किया गया है। क्या सुरक्षित क्रीज में है वहां पे या फिर विकेट गंवाना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। संभवतः सुरक्षित क्या निर्णय आएगा अंपायर का, ये देखना होगा। हालांकि टीवी अंपायर द्वारा चेक किया जा रहा है, ऐसे में सुरक्षित है क्रीज में। जी हाँ, नॉट आउट का निर्णय आता हुआ यहाँ अंपायर, थर्ड अंपायर द्वारा, और वसीम रजा सुरक्षित क्रीज में, बाएं हाथ के बल्लेबाज। ग्लोबल डाडू टाइटंस 106 4 विकेट पे 13.4 ओवर की गेंदबाजी। रजा 2, दरदिश 18, 7.76 और बड़ा शानदार ये मुकाबला रहा है जे के सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025 प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। यहाँ एक रन तेजी के साथ दूसरे की मांग, तेजी के साथ दूसरा रन भी, थोड़ा दिशाहीन थ्रो आया और 2 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 और खाते में अच्छी रणनीति, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना। आखिरी ओवर्स में आपके पास विकेट हाथ में होंगे तो अतिरिक्त प्रहार किए जा सकते हैं, वहां पे कोशिश जरूर होगी बल्लेबाजों की कि अंतिम ओवर्स में आप 8-10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन जोड़ें तो 40-50 रन और तेजी के साथ अगर जोड़ लें 170 तक पहुंचा जा सकता है। एक बार फिर स्वीप किया खूबसूरती के साथ, इस बार गेंद गई है गैप में, सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए चौका मिलता हुआ। और मैंने पहले भी जिक्र किया कि वसीम रजा और दरदिश गोनी दोनों बल्लेबाज स्वीप बहुत बढ़िया खेलते हैं। ये 4 रन जरूर मिले, साइड आर्म एक्शन के साथ गेंदबाजी करते हैं। बड़ा खूबसूरत एक्शन आमिर सोफी का, पर यहाँ सही समय पे कनेक्शन भी हुआ, मिलन हुआ गेंद और बल्ले का, और चौका भी मिल गया। ओवर की हो गई समाप्ति, 14 समाप्त, 112 4 विकेट पे। रजा 8, दरदिश 19, 160 प्रोजेक्टेड स्कोर। 6 ओवर का खेल, 4 ओवर समाप्त, कोटा पूरा किया आमिर सोफी ने। गेंदबाजी विश्लेषण आइए देख लेते हैं। 4 ओवर कोई मैडल नहीं, 25 रन 1 विकेट। अच्छा, 6 से थोड़ा ऊपर का उनका इकोनॉमी रहा है इस अपने कोटे में, अपने 4 ओवर्स में। रियल सुल्तान समर बुक की अगर बात करें, तजमुल बाबा और हिनान मलिक, वो एक मुकाबला 10 विकेट से जीता था, फिर अगले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, उससे पूर्व एक मुकाबला हारे थे। तो ऐसे में 3 मुकाबलों से 2 हार और 1 जीत, ये उनका आखिरी मुकाबला है। और डाडू टाइटंस की अगर हम बात करें तो उनका भी ये आखिरी मुकाबला है लीग मुकाबले की अगर हम बात करें पूल बी में, और वे भी 3 में से 2 हारे, 1 जीत अर्जित की है। तो कहीं ना कहीं एक सम्मान दोनों की परिस्थितियां, यहां से जीतना जरूरी है। ये डू और डाई की सिचुएशन है, करो या मरो जैसी सिचुएशन है, और जो टीम यहां से जीत अर्जित कर पाएगी वो सीधे क्वार्टर्स में प्रवेश करेगी। 112 पे 4 नेवर की शुरुआत, यशजीत 2 ओवर 10 रन 1 विकेट दूसरे स्पेल में लेकर के आए हैं नॉर्दर्न पवेलियन एंड से। 2-3 कदम का बॉलिंग रनअप, लेफ्ट हैंड स्पिन गेंदबाज है, इस बार उड़ाया खूबसूरती के साथ, हवा में रही गेंद पर, पीछे फील्डर तैनात थे, उनने गेंद को सफाई के साथ फील्ड कर लिया। सिंगल मिल जाएगा यहां पर दोनों बल्लेबाजों को। एक और खाते में पहली गेंद पर सिंगल, दरदिश सामने होंगे नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे, और वसीम रजा सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज, एक दाएं हाथ का और एक बाएं हाथ का, और गेंदबाज भी बाएं हाथ के यशजीत, और उनका भी बहुत ही बेहतरीन ये अब तक का सफर रहा है गेंदबाजी का। 2.1 और मात्र 11 रन 1 विकेट उन्हें मिला है, तो अच्छी गेंदबाजी की है अगर जिक्र करें इस गेंदबाज की। वसीम रजा अनुभवी खिलाड़ी हैं, अच्छा खासा अनुभव है, पर यहाँ रन गति को उछालना जरूरी है, रन गति को बढ़ावा देना जरूरी है, थोड़ा गियर्स बदलने की आवश्यकता है वसीम रजा और दरदिश गोनी को। 8 पे वसीम रजा, 113,
इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने गए थे पर गेंद बल्ले के अंदरूनी भाग से लगने के बाद पैड से टकराई, ऑफ साइड में चलेगी, विकेट कीपर उस ओर चले गए फाजर रशीद, गेंद को फील्ड कर लिया, रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, 113, 4 विकेट। और अभी भी एक बेहतर स्थिति में, क्रिकेट बहाना चिंताओं का खेल है पर जो वर्तमान में करंट पोजीशन है इस टीम की वो बेहतर है क्योंकि आप बड़े स्कोर तक पहुंच सकते हैं। ये कनेक्शन सही है, खूबसूरत स्ट्रोक है पर पीछे फील्डर तैनात सजाद गनाई, एक चिप्पे के बाद गेंद उनके पास पहुंची, सफाई के साथ गेंद को फील्ड कर लिया, थ्रो किया पर उससे पूर्व 1 रन पूरा कर चुके थे दोनों बल्लेबाज, 1 रन और। ग्लोबल डाडू टाइटंस 114, 4 विकेट पे 15वां ओवर पारी का जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग दूसरा एडिशन बख्शी स्टेडियम, ऐतिहासिक मैदान, प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस, जेके सुपर सीमेंट बनाए मजबूत कश्मीर, और मजबूती, हर एक मजबूती का एहसास जरूर। 114 पे 4, 14.3 के बाद दारदिश 20 पे 19 गेंदों से, रजा सामने 9 पे 7.84 प्रति ओवर के हिसाब से रन बने। 15वें ओवर की गेंदबाजी इस समय, और इस ओवर के बाद 5 ओवर का आना बाकी। यशजीत अब तक अच्छी गेंदबाजी की है, इस ओवर में मात्र 3 सिंगल खर्चे, पर दर्दिश और वसीम रजा अब कुछ आक्रामक शैली से बल्लेबाजी की आवश्यकता, स्कोरबोर्ड को गतिशीलता देने की आवश्यकता। ये बड़ा स्ट्रोक खूबसूरती के साथ गेंद को सीधे डिपॉजिट किया है स्टैंड्स में, और ग्रैंड स्टैंड्स में गेंद जा लगी है। 6 रनों का निर्णय आता हुआ छक्का खूबसूरती के साथ, 6 और खाते में, और इस छक्के के साथ रन संख्या पहुंच गई 120। वसीम रजा एक बेहतरीन बल्लेबाज है, और कनेक्शन सही था, मिलन सही था मिडल ऑफ द बैट से, क्या लाजवाब स्ट्रोक खेला और 6 रन अर्जित किया अपने लिए अपनी टीम के लिए। इस छक्के के साथ रन संख्या 121, 4 विकेट पे। आखिरी गेंद का आना बाकी, 9 रन आ चुके हैं इस ओवर में, अभी भी एक गेंद का आना बाकी। फुल टॉस, हवा में गेंद, पर यहाँ हेनान ने गेंद को फील्ड तो कर लिया, वो लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर वाइडिश तैनात जरूर थे जब तक वे गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, 2 और खाते में जोड़ लिए। तो इस ओवर में 11 रन आ चुके हैं, 3 सिंगल, 1 छक्का और उसके बाद 2 और, तो कुल मिलाकर 3 ओवर में 21 रन यशजीत ने खर्चे, 1 विकेट मिला। 15 के बाद 123, 1 2 3 4, ये रन संख्या 1 2 3 रन संख्या 4 विकेट के नुकसान पर 123 पे 4, रजा 17, दर्दिश 21। 5 ओवर का खेल बचा है और देखना होगा इन बचे हुए 5 ओवर्स में 10 रन प्रति ओवर 150, तो फिर 173, 10 से अधिकतम तो फिर 180, और 8-9 प्रति ओवर के हिसाब से तो फिर आप 160, 165, और कोशिश जरूर होगी वो 170, 180 तक पहुंचने की, क्योंकि दूसरी पारी में आसान रहता नहीं है। और पिछला मुकाबला भी हमने देखा, सोपोर स्टैलियंस की टीम मात्र 1 रन से हारी थी। ये क्रिकेट, ये विकेट, ये वातावरण आसान नहीं रहता, एक चुनौती जरूर देता है दूसरी पारी में टीम को उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास जरूर रहता है, पर कठोर रास्तों से गुजरना पड़ता है। पर यहाँ समरबुक की अगर हम बात करें तो सब मुश्किल जरूर होगा दूसरी पारी में। अंडर लाइट्स, हालांकि ये मुकाबला चल रहा है, पहली पारी और दूसरी पारी भी अंडर लाइट्स में थोड़ा सा ड्यू जरूर होगा, वहाँ पर अवसर मिल सकता है, पर इस विकेट पे पिछले मुकाबले में उतना ज़्यादा ड्यू देखा नहीं गया है, और वो एक अच्छी खबर रहती है दूसरी गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए। फिलहाल सजाद नासिर गनई का इस्तेमाल, इससे पूर्व 1 ओवर की गेंदबाजी, 9 रन 1 विकेट, ये उनका दूसरा ओवर है, और पारी का 16वां ओवर 15.1 के बाद 123, 4 विकेट के नुकसान पे। नासिर गनई साउदर्न पवेलियन एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, और कुछ दर्शक भी उपलब्ध हैं यहाँ पर, अच्छी खासी तादाद है दर्शकों की, आनंद ले रहे हैं इस मुकाबले का। जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक, यूट्यूब और रेड एफएम जेके यूट्यूब के माध्यम से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। अच्छा स्ट्रोक ड्राइव किया, पर पीछे फील्डर तैनात, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का पर्याप्त समय। 124 पे 4, 15.2। नासिर गनई अभी तक 10 रन दिया, अच्छे गेंदबाज हैं, हालांकि आज उनसे एक कैच छूटा जरूर, पर यहाँ उसकी भरपाई के लिए आपको 1 विकेट जरूर मिला, 1 और विकेट चाहिए, साझेदारी को तोड़ना जरूरी है। 124 पे 4, 16वें ओवर की गेंदबाजी। Nasir in his second over, 1 for 10. 1, 2, 4 for 4. That's a big shot. That's aerial. There is a man at long on. He is taken.
It's a big wicket. It's a massive breakthrough. And Wasim Raza is taken. In the end, it's a good catch. Look at that. He goes aerial and doesn't time it properly. Finds Tajamal Baba to perfection. And Baba makes no mistake. Tall, lanky Baba. Never easy for Baba-like fielder to adjust and complete a catch. That too under the lights. That one, it's come up the lower part. It's Raza on his way. And Nasir Ganai gets his one more wicket. Another biggie. Such a big wicket for Nasir. It's 1-2-4-4-5. And the real Sultan Summerbugha pulling things back at the right moment. Now the bowlers are picking it up at the moment when they needed to put brakes on. They're now just trying to dry up runs. And it's again gone from bad to worse for the batting unit. We can say it's again back to the high and dry. Who will break free? Who will set things ablaze? Let's see in the next passage of play with Sheikh Nazir. धन्यवाद. मैं आपसे सहमत हूँ क्योंकि ब्रेक्स ज़रूरी है और यहाँ ब्रेक लगाया ज़रूर विकेट के चलते. 124 पे 5, 15.3 ओवर की गेंदबाजी. एक 124 पे 5. नासिर गनई अच्छी गेंद, बेहतर गेंदबाजी. और ऐसे में ऐसे समय में आप इस प्रकार की गेंदबाजी विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं, स्टंप्स पे गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाज को अवसर नहीं देते हैं, तो मैं समझता हूँ ये आपकी कला है, ये महानता और इस प्रकार का प्रयोग करना ज़रूरी है. 124, 5 विकेट पे 15.3. यहाँ एक रन ज़रूर मिला. 125. अब बढ़कर के रन संख्या ग्लोबल डाडू टाइटंस की. पर यहाँ अंतिम ओवर्स में रन गति पे अंकुश लगाना जरूरी द रियल सुल्तान समरबुग को. और वहीं पे जीडी टाइटंस की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा गियर बदलने ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद 4 ओवर का आना बाकी. नासिर गनई 2 विकेट प्राप्त कर चुके हैं. इस बार स्टेप आउट करके बाहर निकले, खूबसूरती के साथ गेंद को खेला और लेकिन फील्डिंग बहुत बढ़िया सजाद सुल्तान द्वारा. निश्चित तौर पे ये 2 रन जरूर बचाए, 2 मिले यहाँ पर टीम को, पर उनसे गेंद छिटकती तो संभवतः चौका मिल सकता था. अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन सजाद सुल्तान द्वारा. 127, 5 विकेट पे. स्ट्रोक बेहतर था पर उससे भी कमाल की फील्डिंग. ये देख लीजिए, हवा में रही गेंद और खूबसूरती के साथ वहां पर उछलते हुए उस गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर जाने से रोका जरूर और 2 रन रोके अपने लिए और अपनी टीम के लिए. 127 पे 5. अंतिम गेंद का आना बाकी. 16वां ओवर, पहली पारी, 19वां मुकाबला. जेके सुपर सीमन रेड प्रीमियर लीग 2025 सेकंड एडिशन प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल. अथवास विद नो कॉन्फिडेंस, अथवास विद कॉन्फिडेंस, क्षमा कीजिएगा, अथवास विद कॉन्फिडेंस. और एतमाद ज़रूरी, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग, और ऐसे में यहाँ कुछ रन ज़रूर मिलते हुए. अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस, जेके सुपर सीमेंट बनाए मजबूत कश्मीर. पर यहाँ मजबूती की ओर बढ़ना है तो फिर रन चाहिए अंतिम ओवर्स में टीम जीडी टाइटंस को. 127 पे 5. वहाँ थर्ड अंपायर को संभवतः निर्णय रेफर किया गया है और देखना होगा. 127 अभी भी रन संख्या 5 विकेट पे 15.5. दर्दिश 24, गौहर 1. और दर्दिश अच्छी पारी खेल रहे हैं, हालांकि करीब करीब रन बॉल 23 गेंदों से 24 रन. और ऐसे में ये रन जरूर मिला. संभवतः फ्रंट फुट नो बॉल चेक की जा रही थी और इन परिस्थितियों में अगर देखा जाए फेयर बॉल का निर्णय आता हुआ. 127 पे 5, 15.5. और ओवर संभवतः समाप्त हो चुका है. यहाँ 16 ओवर की समाप्ति. और अब एक बार फिर यशजीत का इस्तेमाल गेंदबाजी में. नए गेंदबाज का चयन, क्या यशजीत से अथवा विजन पांचल से? यशजीत संभवतः गेंदबाजी करेंगे.
पारी का 17वां ओवर समाप्त होने जा रहा है। 16वां समाप्त, 17वां प्रारंभ होने जा रहा है। 16 समाप्त, 129 पे 5। दर्दिश सामने रिवर्स स्वीप, एक सिंगल मिलता हुआ यहाँ पर। 1 रन और खाते में, 1 रन के साथ रन संख्या 130 17वें ओवर में 5 विकेट पे जीडी टाइटंस। बच्चे में 4 ओवर में 40, 170। कोशिश जरूर होगी 170 तक पहुंचने की, एक चुनौती देनी है दूसरी पारी में, पर अब तक अच्छा क्रिकेट इस सत्र में खेला है द रियल सुल्तान समरबुग ने। जिस प्रकार से गेंदबाजी, फील्डिंग हुई है, थोड़ा रन गति पे अंकुश लगा है, विकेट कुछ प्राप्त जरूर किए हैं, तो कुल मिलाकर एक संघर्षपूर्ण क्रिकेट इस समय। 130 पे 5 यशजीत का आखिरी ओवर, अपने कोटे का जो 4 ओवर का सीमित कोटा रहता है गेंदबाज का। 3.1 ओवर 22 रन 1 विकेट। दर्दिश गोनी सामने और बेहतरीन स्ट्रोक और सीधे स्टैंड्स में 6 मिल जाएंगे यहां पर दर्दिश गोनी को। कमाल का स्ट्रोक था, सही कनेक्शन और 6 रन मिलते हुए। इस प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता भी है, ये क्षमता है दर्दिश में, और वो भी यशजीत के विरुद्ध इस प्रकार का स्ट्रोक खूबसूरती के साथ। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक और 6 रन अपने के लिए अर्जित किया, अपनी टीम के लिए। 6 रन के साथ रन संख्या 136 पे 5 17वें ओवर में। दर्दिश सामने 32 पे 25 गेंदों से यशजीत 7 रन 2 गेंदों से। अगली गेंद लेकर के एक बार फिर उठाया, ये हवा में है गेंद, हिनान मलिक सामने हैं, पर एक टिप्पे के बाद गेंद उनके पास पहुंची। जब तक वे गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, दूसरा रन भी पूरा कर लिया दर्दिश और गवर रशीद ने। 2 और खाते में 138 पे 5 17वां ओवर। कोशिश जरूर 170 180 तक पहुंचने की। यह पहली पारी 19वां मुकाबला, पूल बी का ये अंतिम और आखिरी लीग मुकाबला, और पूल ए का मात्र एक मुकाबला बचा है। सुल्तान वॉरियर्स बारामूला बनाम सोपोर स्टालियंस। कल शाम जुड़ना न भूलिएगा ठीक 6 बजे जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक, यूट्यूब और रेड एफएम जेके यूट्यूब के माध्यम से आखिरी लीग मुकाबला पूल बी का। और इस समय 138 अथवा 139 ये देखना होगा। 4 गेंदें हुई है। 139 पे 5 16.4 ओवर की गेंदबाजी। 167 प्रोजेक्टेड स्कोर, 31 रन खर्चे हैं, 1 विकेट मिला है 3.4 में यशजीत को, और इस ओवर में 10 रन आ चुके हैं 4 गेंदों से। 2 गेंदों का आना बाकी। बड़े स्ट्रोक के लिए जरूर सामने गवर रशीद, वो जाने जाते हैं बड़े स्ट्रोक्स के लिए, बड़े हिट्स के लिए, और कोशिश होगी बड़े स्ट्रोक की। और यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक खेला हवाई, और गेंद स्टैंड्स में एक बार फिर। इस ओवर में यह दूसरा छक्का, गौहर रशीद के बल्ले से निकलने वाला यह पहला छक्का, और कुल रन संख्या 145 145। यशजीत को इस ओवर में अच्छे खासे रन खर्चने पड़े हैं। जी बिल्कुल, और इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि नीचे रहती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर का था। दिलचस्प आंकड़ा। जी हाँ, थैंक यू बराबर भाई, ये मेरे जहन में ये बात स्पष्ट करने के लिए। फाजल रशीद विकेट कीपर द रियल सुल्तान की ओर से, गौहर रशीद बल्लेबाज उनके भाई हैं। ये 2 धर्मवीर हैं इस समय। एक जीडी टाइटंस के लिए गौहर रशीद खेल रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं, और फाजल रशीद जो है वो द रियल सुल्तान समरबुग के लिए विकेट कीपर का रोल प्ले कर रहे हैं। 145 पे 5 17 समाप्त। 3 ओवर का खेल। यशजीत के 4 ओवर में 17। ये पिछला ओवर काफी महंगा गया। रशीद, गौहर रशीद 8 पे, दर्दिश 35 पे। 3 ओवर 30 रन 175। यहाँ कोशिश जरूर हो गई उस लक्ष्य तक पहुंचने की। It's 145. Gawar Rashid playing for GD Titans. Fazil Rashid playing for the Real Sultan Samarbug. And I remember at the international arena, 2 brothers playing for England, and the third one made his test debut for Zimbabwe this year. And this is another interesting information coming your way. One we have here, the 2 brothers playing for 2 different clubs. Back in England, there are 2 playing for England and the 1 is playing for Zimbabwe. 145 for 5. Pressure first ball, yucks him there. Take out nicely. That's the beauty of Dardish Goni. Performing on consistent basis. Continuity is important. It's 146 for 5. We are into the 18th over. Nasir in his third, 2 for 16. Oh, knocked him over, clean bowled. Gawar Rashid is undone. He's gone on 8 of 5 balls. This is third one for Nasir Ghanai.
The catch gone down earlier on. Now with the ball, he's there to support his team. He has picked up third one this evening. He's played on Gawar Rashid. Looks disgusted and is going back to pavilion, and that brings the number 8. What he's gonna do now? What will number 8 do for his team? Gawar Rashid could only hit 1-6. He batted with a strike rate of 160. Nasir gets his wicket, the important one. Down to number 8. Dardish on one side. He has been rock solid. One hand he kept wickets intact, but from other end they lost 6 of the batters. 6 wickets falling from other end. One end he kept it quite tight, wickets intact. Vikas Singh walks out at number 8. What can Vikas do? Will he do something that will prosper his team? 146 for 6. That's a good delivery. Straight away. The one which surprised Vikas Singh. There's a bounce on offer. Starts off with a nasty one. 146 for 6. Halfway mark in over number 18. 15 balls remaining. They need some 15-20 runs here. Vikas comes down the track, and that is going to prosper his team. That is going to be the real Vikas for his team, and that brings up 150 for Global Dadoo Titans. Step out and takes him on. Go straight down the ground. Another man is going to drop down to the longer boundary. Much needed boundary. 150 for 6. Nasir conceded 20 of his 2.4. He has picked up 3 important wickets this evening here at the Santa. That one, good delivery. There is a shot for LBW. An umpire is unmoved. Vision is still appealing. And one more untaken leg by signalled. 151 for the loss of 6. Nasir Ganai is surprised. He's going back to the top of his bowling mark. And we're just talking about that prosperity. Vikas. And he has done well with that 4. He has done exactly the Vikas of his team here. And that boundary prospered his team to some extent. 151 for 6. The last ball of 18th over. Look what he has done here. Used his pace. And ball is racing away. It raced away for a 4. You can't see anyone else doing this. This is Dardish Goni for you. Look unusual. Oh, used his pace. Reverse sweep comes into play and gives it the direction he would have never expected. He will go like this, a pacey one, and he will reverse his stance. Gutsy or brave. Not only fortune favors the brave, but he has been gutsy, bravado with the bat. Brave decision to make. Decided to reverse his stance. Gets 4 for that. 155 for 618 done. अठारह समाप्त 155 पे 6 2 ओवर का खेल बचा है. विकास सिंह 4 पे, दर्दिश गोनी 40 पे. साजिद डार को एक बार फिर याद किया गया गेंदबाजी में. पर दर्दिश अलग प्रकार की मानसिकता, बेहतरीन बल्लेबाज हैं. उनके पुल शॉट, उनके कवर ड्राइव्स. और यहाँ पहली गेंद पर बोल्ड कर दिया विकास सिंह को. चलिए, विकास जीडी टाइटंस के लिए नहीं, विकास
द रियल सुल्तान के लिए, और वो भी गेंदबाज साजिद डार द्वारा एक और विकेट बोल्ड कर दिया पहली गेंद पर विकास सिंह को। खूबसूरत गेंद थी साजिद डार की, बहुत ही बेहतरीन, सीधे स्टंप्स पे बड़ा स्ट्रोक खेलने गए थे पर संपर्क नहीं हुआ और विकेट मिलता हुआ द रियल सुल्तान समरबुक को। एक और विकेट, यह 7वां संभवतः गंवाया है। 155 पे 7, 18.1 ओवर की गेंदबाजी, 4 बनाए 4 गेंदों से साजिद डार ने बोल्ड किया। फिर बात हो रही थी दर्दिश गोनी की, वो खूबसूरत बल्लेबाज है, उनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव है और बेहतरीन स्ट्रोक्स खेलते हैं, चाहे उनके कवर ड्राइव हो, सामने पुल शॉट्स, उनके कट खूबसूरत और सीधे बल्ले से स्ट्रेट ड्राइव्स कमाल के रहते हैं। रिवर्स स्वीप को उनसे सीखे, कमाल की बल्लेबाजी, और पिछले मुकाबले में भी उन्होंने 70 से अधिकतम की पारी खेली थी। अरे इस मैच में भी एक बेहतरीन पारी। उमर मलिक जीडी टाइटंस की ओर से नंबर 9 पे 155, 11 की दुकान बाकी इस पहली पारी में। कहाँ तक पहुँच पाएगी जीडी टाइटंस की टीम, ये देखना होगा। साजिद डार अपना आखिरी ओवर 3.1 ओवर 23 रन 1 विकेट। उमर मलिक बाएं हाथ के बल्लेबाज सामने पहली गेंद लेकर के ऑफ स्टंप से बाहर थी ये गेंद, प्रहार किया, अपनी जगह खड़े खड़े खेलने का प्रयास, पर रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। वो मिलन नहीं हुआ सही समय क्योंकि आप ठीक गेंद के पीछे नहीं आ पाए थे, गेंद की लाइन में नहीं आ पाए थे, तो ऐसे में वो गेंद को कनेक्ट करना अपने बल्ले से आसान नहीं होता। डॉट के साथ संतुष्ट 155 पे 7, 18.2, 19वां ओवर और 4 गेंदों का बाकी, 8.45 ये करंट रन रेट। साजिद इस ओवर में अगली बार उमर मलिक के लिए फिर पिछली गेंद की पुनरावृत्ति, पड़ने के बाद बाहर की तरफ अच्छी खासी टर्न और आउट स्विंग गेंद में और सीधे विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। उमर मलिक 0 पे 2 गेंदों से 40 दर्दिश ने बनाए। 155 पे 7, 3 गेंदें इस ओवर में बची हैं। 18.3 ओवर की गेंदबाजी। और देखना होगा साजिद डार इस ओवर में क्या एक और विकेट प्राप्त कर सकते हैं। और अंदरूनी भाग लगा, नीचे रहते हुए गेंद विकेट कीपर से चूक, वहां पर गेंद पीछे जा रही है लॉन्ग स्टॉप की ओर। जब तक फील्डर आकर के गेंद को थ्रो करते सजाद सुल्तान, तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था कुछ रन लेने का। रन संख्या अब 155 से बढ़कर 156 अथवा 157, ये देखना होगा कि 2 रन पूरे किए तो 157। उमर मलिक और दर्दिश गोनी बीच मैदान में, हालांकि एक बार फिर चेक किया जा रहा है और देखना होगा फ्रंट फुट नो बॉल चेक की जा रही है अथवा जी हाँ, और कोई भी निर्णय थर्ड अंपायर का निर्णय अब जा करके आता हुआ। एक 157 पे 7, 18.4 ओवर की गेंदबाजी। अभी भी 2 गेंदों का बाकी। उमर मलिक 2 पे सामने, 2 रन मिले इस गेंद पर। यहाँ वाइड का इशारा, ऑफ स्टंप से वाइड लाइन से काफी बाहर थी। 1 रन और खाते में अतिरिक्त के रूप में, अतिरिक्त गेंद और फेंकनी पड़ेगी और रन संख्या 158 पे 7, 18.4। बाउंड्रीज पे ज्यादातर खिलाड़ियों को तैनात किया गया, ये देखते हुए कि बड़े स्ट्रोक बचाने जरूरी है। सिंगल डबल से उतना फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर कोशिश जरूर यहाँ पर बल्लेबाजों की गेंद अंतिम 8 गेंदों से कम 10-15 रन और जोड़ लिए जाए, 170-175 तक पहुंचा जाए सफलतापूर्वक जीडी टाइटंस द्वारा। जे के सुपर सीमर रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025 प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। अपील जोरदार उंगली फिजा में लहराई बलविंद्र कुमार सोनी की। विकेट मिलता हुआ एक और साजिद डार को विकेट मिला द रियल सुल्तान समरबुक को, और यह 8वां विकेट गंवाया यहाँ पर टीम ने। जीडी टाइटंस ने 8वां विकेट गंवाया। 158 पे 8 और सीधे सामने पैड पे जा टकराई, अपील हुई और स्वीकार कर लिया बलविंद्र कुमार सोनी ने। एक और एलबीडब्ल्यू और वापस लौट रहे हैं फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल। 158 पे 8, 2 रन बनाए 4 गेंदों से उमर मलिक ने। एलबीडब्ल्यू साजिद डार 158 पे 8, 18.5, अंतिम गेंद खाना बाकी और उसके बाद फिर आखिरी ओवर। मात्र 7 गेंदें बची हैं पहली पारी में। 19वां मुकाबला इस टूर्नामेंट का। जे के सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग बनाए मजबूत कश्मीर, प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस।
अंतिम गेंद इस्माइल मोहतशम, नए बल्लेबाज इस्माइल मोहतशम। देखना होगा इस्माइल यहाँ कुछ बड़े, और पिछले मुकाबले में उन्होंने एक अच्छी पारी खेली थी, एक छोटा सा कैमिया इस्माइल ने खेला था। और यहाँ पर भी ये अंतिम 7 गेंदों पे कुछ प्रहार करने ज़रूरी, लेकिन दूसरे छोर से दर्दिश गोनी है, तो अंतिम ओवर संभवतः वो खुद ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगले ओवर में कुछ बड़े स्ट्रोक आने ज़रूरी हैं। वो कोशिश ज़रूर करेंगे वहाँ पर दर्दिश गोनी, ये तय है, क्योंकि आखिरी ओवर होगा पहली पारी का। साझेदार और पैड पे टकराई पर लेग स्टंप को छोड़ दिया। अंतिम गेंद पर रन है, ओवर समाप्त, 19 पूरे, 158 पे 8। ग्लोबल Dadoo Titans. Last over is coming up, 158. Finally, they are somewhere around 160. With 1 over to go. Sajadar 4 overs, 2 for 26. Up to the mark in today's game, bowled really well. On 2 other occasions, he lost his rhythm in the tournament, but he has been a fine finding of the side as far as his team, the real Sultan SumerbughvsGlobal, is concerned. Feroz Ahmed Butt has found a perfect one for his team. He's known for his cameos, and with the ball he's someone who can keep you in the game. 158 for 8. As we are going to be in the final over the first ball from Nasir Ganai there. And Dardish, he has to look for runs here. He needs some of the boundaries. A couple of boundaries will really help this side. Will Nasir allow him to break free? Will Dardish manage to get 1 or 2 boundaries? That's 4. That's into the extra cover boundary for 4. Finally, he manages to break free. And with that wonderful shot, he gets 4. It's 162 on the board. They go past 160. How fast, rapid, quick, cheeky into the boundary. Dardish Goni moves to 44 of 31. Nasir gone for 28 and has picked up 3 important wickets. Here he goes again, that one. He's lucky, he gets away with that one. A dot delivery here is of great importance. Nasir is doing well here. He gone for a 4. The next ball is a dot delivery. That's important. And that's what the real Sultan SumerbughvsGlobal side require and need at the moment. 162 on the board. We're into the last over. Here is Nasir again. He's beaten again. That's a beauty. Mix it up it. A nice mix up there. That's good delivery. Little slobber in the end. And batter unable to find a way to keep that one away. That's a good delivery. That is a wonderful delivery from Nasir Ganai. The next one is little uppish and aerial. Will this be taken? No way. It's going to land in no man's space, and before Baba can come in, the last ball is coming up. And as we watch, there is brace headed to the tally. With that, it's 164. Last ball is coming up. It's going to be Dardish on strike. Moves to 46. He needs 4 runs to get to his 50. In the meantime, he gets ready. As Nasir charges in. That one in the gap. Will he get to his 50 here? Yes, it does. That's 50 for Dardish Goni in the end. And with that 50, it's 168. I think they finish around that. Let me confirm first, but that's a quality shot. Step out. Has given it everything there. Look at that shot. Oh, nice. In control. Into the gap and down to the extra cover boundary. A quality boundary coming. 50 to Dardish in the end.
So that's it we have for you from inning number 1. We shall be back with inning number 2 in a while from now. Join us for the chase. Till then, assalamu alaikum and fi amanillah.
Assalamu alaikum and welcome to the run chase. The fielding unit is out in the middle. They're in a kind of a little hurdle there. You can see on your screen Global Dadoo Titans. They're very much close to that batting strip, the 22-yard strip, and we got the two umpires who are in readiness. They are ready to take the field and waiting for the two openers to make their way out to the center. Under lights, never going to be easy, but it's going to be a great game of cricket. It promises to be a wonderful chase. As fielding unit is all set, they're keeping themselves up to the mark. Drills are going on, warm-up is going on. It's chase time in the middle. Look at the beautiful Bakshi Stadium. It's all set to host the inning number 2, where Real Sultan Summerbugh require 169 to prevail against the likes of Global Dadoo Titans. Nice pictures, wonderful scenes. A place where cricket is being played at its best, where the game of cricket is taking you to the next heights. And this one promises to be another humdinger, another crackerjack, a run chase that will take you through ups and downs, where we will see the ebbs and flows. We will enjoy the game of glorious uncertainties. The resilience, the determination, dedication, the class and the resilience will be found in next 20 overs. We will go through different kind of situation. Game of cricket, it's a unifier. It unifies us, irrespective of caste, creed and color. And for those who want to be part of tomorrow, the lone game coming your way, the last league game coming your way, you have to log on to www.district.in and just buy the ticket and be here for that only game for tomorrow. That is scheduled for tomorrow, coming your way only on JK Sports Time, Facebook, moreover YouTube and Red FM JK YouTube. And the two umpires are ready to take the field. And you can see that smile, conversation, sweating it out at the moment. It's gonna take sweat, it's gonna take hard work, it will take dedication. And thanks to the sponsors of JK Sports Time, by virtue of which we are here, the two openers stride out to the middle. It's Tajamal Baba and Hinan Malik. And these moments coming your way, look how they're going through different drills, warming up, exercising their arms, limbs, and are all set for the chase in the middle. Match referee had a chat earlier on with the two officials. It's going to be game time in a while from now. 169 is what they're looking for this evening. And this game will decide the fate of both the teams in the tournament. It's a fate decider in the tournament, thanks to the JK Super Siemens, the title partner, and equally thanks to the co-powered by Athwas Retail, Athwas with confidence in a hurdle. Lefty, he's having a chat with all the team members. As a unit, as a team, they have to fight it out here. It's one game at one time. What they will do now, and who will rise, who will shine, the time will tell us. This is going to be over number 1 coming up. Tajamal Baba. Now he joined at the club of highest run getters in the tournament. Recently we saw that ladder boat and he was one of them there.
The top run getter is Sahil Shafi, the orange cap holder with 215 runs. And in the bowling department, the leading wicket taker is Yash Garg, who's leading the chart with 17 wickets. The purple cap owner is right on top there in the bowling department. The real Sultan Summerbugh. Is it going to be a force to reckon? How they push the chase. Are they gonna drag this game away from Global Dadoo Titans? Can they push them away? Which one will deplete? Who will rise? What's on cards? Join us this evening. Have fun and listen into the wonderful vibes coming your way. 169 behind from 20 overs. As Tajamal Baba, and he's got Hinan. Hinan will take strike. Baba is going to be on the other end. Imtiaz lefty to start the proceeding. With the ball, I got Nazir in the com box. It's over to you to take over beloved listeners and viewers through first 3 or 4 balls in over number 1. धन्यवाद, स्वागत आप सभी का इनिंग ब्रेक के बाद पुनः स्वागत। 168 8 विकेट पे 20 ओवर में बने ग्लोबल डडू टाइटंस के 169 लक्ष्य मिला है चेज करने के लिए द रियल सुल्तान समरबुघ को। 20 ओवर की पारी 169 चेज करने के लिए। तजमुल बाबा हिनाल मलिक गजब के फॉर्म में, पिछले मुकाबले में कुछ बेहतरीन पारियां आई हैं, पर यहाँ इस डू और डाई सिचुएशन के मुकाबले में ये परिस्थितियां दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस मुकाबले को जीतना काफी जरूरी दोनों टीमों के लिए, पर एक के हित में जीत अर्जित आएगी। और यहां लेट्स प्ले का निर्णय आता हुआ दूसरी पारी प्रारंभ होती हुई। हिनान मलिक स्ट्राइक लेने की तैयारी में, तजमुल बाबा नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ में। शुरुआत 8.45 रिक्वायर्ड 100। इम्तियाज लेफ्टी करेंगे गेंदबाजी में शुरुआत और दूसरी पारी की पहली गेंद लेकर के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज इम्तियाज लेफ्टी हिनाल मलिक के लिए। इस बार ऑन साइड में खेला, गैप में गई है गेंद, उस ओर फील्डर जा रहे हैं। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन दौड़ करके पूरे कर लिए। खाता खुला यहां द रियल सुल्तान समरबुघ का और खाता खुला हिनान मलिक का। 2 बगैर नुकसान के एक अच्छी शुरुआत, एक ठोस आधारशिला प्रदान करनी होगी इन 2 बल्लेबाजों को, और कोशिश जरूर होगी कि पहले 6 ओवर अब बेहतर गेंदबाजी और वहीं पे बल्लेबाज विकेट को सुरक्षित रखते एक ठोस शुरुआत दे पाए, एक आक्रमण कर पाए, बेहतर बल्लेबाजी कर पाए। हिनान मलिक सामने अच्छी गेंद थी इम्तियाज लेफ्टी की, और ज्यादा गति का इस्तेमाल नहीं किया। स्टंप्स पे ये गेंद सम्मान दिया, सीधे बल्ले से बैट और पैर मिला करके वापस बॉलर की दिशा में बगैर किसी रन के। अच्छा क्रिकेट खेलना जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग 2025 सेकंड एडिशन प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। जेके सुपर सीमेंट बनाए मजबूत कश्मीर। 2 बगैर नुकसान के। ये अच्छा शॉट है पर सीधे फील्डर के पास। गवर रशीद वहां पर तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। हिनान मलिक को तजमुल बाबा 2 अटैकिंग क्रिकेटर, विस्फोटक बल्लेबाज, एक विस्फोटक शुरुआत चाहिए द रियल सुल्तान समरबुघ को, क्योंकि जितनी आप बेहतर शुरुआत दे पाएंगे, जितना आप आक्रामक शैली से बल्लेबाजी कर पाएंगे शुरुआत में, उतना दबाव आएगा गेंदबाजों पर। अच्छी गेंद थी, एक बार फिर बेहतर गेंद, सही दिशा और लंबाई पे, सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी। इम्तियाज लेफ्टी की ये क्षमता है, ये खासियत है, एक बेहतरीन गेंदबाज, एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। जीडी टाइटंस की ओर से इस प्रतियोगिता में खेलने का अवसर मिला है, हालांकि बल्ले से उतना योगदान नहीं दे पाए इस टूर्नामेंट में, पर गेंदबाजी बेहतर करनी होगी, आवश्यकता भी है, दायित्व है, उस दायित्व को निभाना जरूरी है यहाँ इम्तियाज लेफ्टी को। 2 बगैर नुकसान के। एक बार फिर गौहर रशीद के पास गेंद, रन नहीं मिलेगा। अच्छी फील्डिंग, पहले ओवर में थोड़ा सा आत्मविश्वास जरूरी, पर किस प्रकार की रणनीति होगी, किस प्रकार की योजना होगी इन 2 बल्लेबाजों की, पर इस कहानी में ट्विस्ट आने वाला जरूरी है, क्योंकि यहां से जीतने वाली टीम अगले सत्र के लिए क्वालिफाई करेगी और हारने वाली टीम के दरवाजे बंद हो जाएंगे इस प्रतियोगिता में। 2 बगैर नुकसान की अंतिम गेंद, एक और अच्छी गेंद। इस अंतिम गेंद पर सिंगल नहीं मिलेगा,
ओवर की हो गई समाप्ति। पहला ओवर सफल ओवर इम्तियाज लेफ्टी का जिसमें मात्र 2 रन आए। सुल्तान वॉरियर्स द रियल सुल्तान समरबुग, हालांकि सुल्तान वॉरियर्स समरबुग इससे पूर्व उनका नाम हुआ करता था, पर अब जाकर के पिछले 1-2 महीने से अहमद फैरोज भट्ट जो कि ऑनर हैं इस टीम के, वो डग आउट में इस समय और थोड़े से चिंतित ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये मुकाबला जीतना अवश्य है और काफ़ी महत्वपूर्ण मुकाबला। इस मुकाबले की महत्वता वो जानते हैं, खिलाड़ी जानते हैं, टीम मैनेजमेंट जानती है, तो ऐसे में थोड़ा सा चिंतित ज़रूर होंगे वो। और वो जो हल्की सी वो शिकन उनके माथे पे नजर आई 2 बगैर नुकसान के ओवर की गेंदबाजी के बाद। मलिक और तजमुल बाबा बीच मैदान में। One is done. Second over is about to start. Imtiaz lefty. Clutch over. Tight over. Just 2 from it. Samir Bell has got the ball. He's going to bowl from the southern pavilion end. Back top side. They are looking forward to this game of cricket. Much anticipated. It's a must-win game. You win, you are through to the next stage. You lose, doors are going to be closed. Tajamal will face ball 1 of run chase. Down the leg side. Down the leg side. Ball is going past. It's on its way. He's going to cut it off. Starts off with a wavered one. Leg by is called. Leg by signalled. And the 2 batters steal 3 runs. It's 5 without loss. First ball down the leg side. I thought it's going to be wide. It's come up the pad. That's what Balwinder Kumar Soni thinks. And he thought, in the end, it's 5 without loss. This is just the second over run chase. 8.71 is the asking rate. Hinan in first over. Kept calm by Imtiaz lefty. Lefty bowled in the right areas, right channels in the first over. And the channel he used, that was around that middle end leg where Hinan was unable to capitalize. Bell is going slight leg side. That's allowing the batters to break free. This time gets hit on the pad, but it's above the knee roll. When Baba gets hit above the knee roll, you can understand it's a tall, and the taller one out in the middle. And it did drift and turn down leg, so no problem at all. Samir has got man at scale leg. That's Imtiaz lefty for Tajammul Baba. Worked away nicely. Good looking shot. That's good cricket from Tajammul Baba. He's back into the form and need to carry that form in today's game. Thank you very much, Irshad Bhai, and thanks a lot. It's your love which keeps we people motivated. 7 without loss in second over. As Samir Bell continues to operate, and that one is a bit lucky there. Can you believe? Look at the bowler. Hand is on his head. Both in disbelief, batter as well as bowler. Has it gone past? Oh, look at that. There wasn't bounce on offer. Could be tight again, but a good running between the wickets. 7 without loss. But good running between the wickets. Where there wasn't single and the 2 batters pinch a single. They steal one here. That's good cricket. If boundaries are not coming, you feel that it's tough to find a boundary. Stick to your plans. Find 1s and 2s, which will keep you in the game, and you have to move forward. Steady. Keep going. That's the first thing. The plan B and other plans, you only need when you feel that you are not able to hit the ball out of the center.
It's high and dry. You feel cagey. You feel clueless. Then you have to find a way to adjust to the conditions here and apply yourselves. 8 for none. Just the beginning. It's a big chase. You can't take any undue risk on the other side. It won't be easy to deal with Bell, who's got the experience. Imtiaz lefty. A man with cool head on his shoulders, with nerves of steel, and the calmness is there. It's 8 for none into the third over. Hinan is on 4 of 10 and Tajamul is on to 1. Hinan. Oh, this time he gets through. Good shot there, and he's going to get 4 more runs into the double figures. The real Sultan Summerbugh does very well on that occasion. Good shot. Cut away nicely. He's going to pounce on balls like these. And this one, he was right there to dispatch it away for a magnificent boundary. Well, it looks like that captain is going to set that attacking field here. One more is added to the offside fold. It won't be easy to break that shield, but he has done earlier on with that quality boundary. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 men on the off. Hinan so strong on offside. This time onto the pad line. Fielder in pursuit. Will he get to the ball? He does well. What a stop. Excellent stop there. What could have been a boundary, and he limits the scoring down to 2. Look at that approach and the intent from fielder. Look at the fielder. The positive energy is there. Look, the replays will depict, and it will summarize what kind of effort it was in the deep. What could have been a boundary, and he limits it down to just a brace. 14 without loss. No run there. Another dot ball. That one again. Hold us up a bit, and lefty is known for cutters. He now need to take care of that too. He need to cover up that. Get your basics cleared and try to cover it up. That's a cut shot again. Good looking shot. And fielder is there to protect it. Just a single. And with that single, it's 15 for none as we are in over number 3. यहाँ डाइव लगाकर रोकने का प्रयास था, पर उनसे गेंद छिटकी और पीछे बैकअप पे खिलाड़ी ने शानदार फील्डिंग करके इस गेंद को बाउंड्री से बाहर रह जाने से रोका जरूर। 15 2.5 ओवर की गेंदबाजी। तजमुल बाबा 1, हिनान मलिक 11, 14 गेंदों से 8.97 रिक्वायर्ड 100। इम्तियाज लेफ्टी बाएं हाथ से ये गेंद। बाबा इस बार बेहतर तरीके से गेंद के पिच तक पहुंचे, खूबसूरती के साथ उसको खेला सीधे बल्ले से सामने की ओर बगैर किसी रन के। ओवर समाप्त 3 पूरे 15। द रियल सुल्तान समरबुग 169 चाहिए जीत के लिए, और 3 ओवर में 15 रन बने। 5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रही है करंट 100। रिक्वायर्ड 100 9.06। लेफ्टी ने 2 ओवर में 9 रन। 4.50 का इकॉनमी। बेहतर गेंदबाजी। बख्शी स्टेडियम ऐतिहासिक मैदान, जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग बनाए नया कश्मीर। प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। ये दूसरी पारी 19वां मुकाबला इस प्रतियोगिता का। पूल बी का ये आखिरी लीग मुकाबला, और कल पूल ए का कुल मिलाकर वो आखिरी लीग मुकाबला, और इस टूर्नामेंट के लीग मुकाबलों की बात करें तो वो अंतिम लीग मुकाबला होगा। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला बनाम सोपोर स्टैलियंस क्रिकेट क्लब। शाम 6 बजे हमें ज्वाइन करना ना भूलिएगा। जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक, यूट्यूब और रेड एफएम जेके यूट्यूब के माध्यम से। फिलहाल समीर बेल 1 ओवर 3 रन, उनका इस्तेमाल एक बार फिर गेंदबाजी में। पहली गेंद इस बार बैकवर्ड पर जाकर के खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। चौका मिलता हुआ यहाँ, और काफी समय से प्रतीक्षा थी इस चौके की। आत्मविश्वास बढ़ेगा इस शॉट के साथ। हिनान मलिक का 4 और खाते में जुड़े, और रन संख्या पहुंच गई 19 पर। बेल थोड़ा ऑफ स्टंप से बाहर थी ये गेंद, हल्का सा और बाहर की तरफ सरकाव था, पर अपने आप को थोड़ा संतुलित किया।
और ऐसे में गेंद को तिरछाड़े बल्ले के साथ गैप में धकेला खूबसूरती के साथ 4 रन और खाते में जोड़ते हुए। रन संख्या 19, 3.1 ओवर। हिनान मलिक एक बेहतरीन अनुभवी खिलाड़ी, 15 पे नाबाद 15 गेंदों से 100 के स्ट्राइक रेट से इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। और उनके साथ तजम्मुल बाबा ने मात्र 1 रन 4 गेंदों से थोड़ा सा शांत दिखे ज़रूर है तजम्मुल बाबा। उसका कारण यह है कि शुरुआत में वो विकेट खोना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आप शुरुआती ओवर्स में विकेट गंवाएंगे तो फिर अतिरिक्त दबाव आएगा, क्योंकि आप 169 चेज कर रहे हैं और इस विकेट पे दूसरी पारी में आसान रहता नहीं है बल्लेबाजी करना। 19, 3.1। समीर बैल, अगली गेंद इस बार लेग स्टंप की शेप में तो दिशा से बट के यहाँ पर 1 रन पूरा किया, पलट कर दूसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाज 2 जरूर और खाते में। अंपायर का इशारा वाइड का, तो 3 रन अतिरिक्त के खाते में आएंगे, 3 रन टीम के खाते में आएंगे। कुल रन संख्या 22 चौथे ओवर में बगैर नुकसान के अच्छी शुरुआत अब तक मिल चुकी है। विकेट सुरक्षित है और ऐसे में बेहतर कहना चाहिए, क्योंकि द रियल सुल्तान समरबुक को बेहतर शुरुआत की आवश्यकता है, ठोस आधारशिला प्रदान करने की आवश्यकता है इन परिस्थितियों में और कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको बल्लेबाजी करनी है। विकेट का जो स्वभाव है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना, परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट करना और फिर बल्लेबाजी करना। ये एक चुनौतीपूर्वक स्थिति है, पर इस चुनौती को आपको स्वीकारना वो आपकी महानता है, वो आपकी कला है। आप प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं, उस प्रतिभा का, उस कला का, उस टैलेंट का प्रयोग कीजिए ऐसे समय में जबकि टीम को आवश्यकता थी। यहाँ बड़ा स्ट्रोक पर सीधे वहां पर मिड ऑन के खिलाड़ी के पास वसीम रजा एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, एक बेहतरीन अनुभवी क्रिकेटर हैं और उन्हें सफाई के साथ गेंद को फील्ड कर लिया। रन संख्या में कोई बेहतरीन, और यहाँ पे शुरुआत में एक विकेट की तलाश जीडी टाइटंस क्रिकेट क्लब को, और जीडी टाइटंस ने अभी तक हर संभव प्रयास किया पर विकेट मिला नहीं है। सामने सीधे बल्ले से एक और बेहतर स्ट्रोक, पर इस बार तैनात वहां पर मिड ऑन, उनने गेंद को फील्ड कर लिया। मिड ऑफ तैनात था, क्षमा कीजिएगा। 1 रन और खाते में, रन संख्या 22 से बढ़कर 23, 3.3 ओवर की गेंदबाजी, चौथा ओवर। स्कोर स्टैटिस्टिशियन जहांगीर जॉन, टीवी अंपायर शौकत मैठी और ऑन फील्ड अंपायर रवि कुमार चौरसिया और उनके साथ बलविंद्र कुमार सोनी। 23, 3.3 के बाद बैल एक विकेट की तलाश में, फिर लेग स्टंप पर, फिर दिशाहीन गेंद, वाइड का निर्णय जरूर आएगा। अंपायर का दौड़ करके रन भी पूरा कर लिया। जी हां, अब निर्णय आता हुआ वाइड का, अंपायर बलविंद्र कुमार सोनी का। 2 रन और खाते में 25 रन संख्या। थोड़ा लाइन और लेंथ को मेंटेन करके रखना है, सही दिशा, एक सतर्क सटीक लेंथ पे आपको गेंदबाजी करनी जरूरी है और दिशा और लंबाई पे नियंत्रण जरूरी गेंदबाज समीर बैल को, क्योंकि जितना आप एक नियंत्रित गेंदबाजी करेंगे उतना आप सिचुएशन को कंट्रोल में रख पाएंगे, बल्लेबाजों को रन गति से रोक पाएंगे। और वो चीज़ इस ओवर में थोड़ी दिखी नहीं है, क्योंकि समीर बैल थोड़ा लेग स्टंप से बाहर दिशा से भटक रहे हैं, इसके कारण कुछ अतिरिक्त रन जरूर मिले हैं यहां टीम द रियल सुल्तान समरबुक को। 25, चौथा ओवर। पावर प्ले ऑन, इस पावर प्ले का लाभ लेने का प्रयास द रियल सुल्तान का। ऑफ स्टंप से बाहर खूबसूरती के साथ कट किया था, पर सीधे इरफान के पास और इरफान ने गेंद को सफाई के साथ फील्ड कर लिया। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। अच्छी फील्डिंग, क्षेत्र रक्षण का भी एक योगदान रहता है, आप बेहतर फील्डिंग करें, क्योंकि आप बेहतर फील्डिंग के चलते रनगति पे अंकुश लगा सकते हैं, एक दबाव बना सकते हैं बल्लेबाजों पर, वो अभी तक देखा जरूर है इस टीम द्वारा। इस बार ऑन साइड में मोड़ा, दौड़ पड़े एक सिंगल के लिए, पीछे फील्डर तैनात हैं, डाइव लगाकर रोकने का प्रयास, सफलता मिली जरूर, पर यहाँ 2 रन जरूर मिल गए बल्लेबाजों को। रन संख्या में वृद्धि होती है, प्रशंसा करनी होगी, शानदार क्षेत्र रक्षण। जो चौका निश्चित तौर पर रोका जरूर है, कुछ रन जरूर मिले हैं द रियल सुल्तान समरबुक को। 2 रन जरूर मिले हैं, तेजी के साथ स्ट्रोक के साथ ही दौड़ पड़े थे, ये डाइव लगाकर, और खूबसूरत प्रयास, सफल प्रयास। अरे यहाँ 2 ही रन मिलते हुए टीम को, 2 और खाते में द रियल सुल्तान समरबुक। अभी भी चेक किया जा रहा है थर्ड अंपायर द्वारा, निश्चित तौर पर 2 रन और खाते में जोड़ते हुए। तो यहां क्या अभी भी चेक किया जा रहा है और थर्ड अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। अब जाकर के निर्णय आना बाकी।
इस समय 25 3.4 के बाद। जी हाँ, 2 रन यहाँ पर खाते में जुड़ेंगे और 2 रनों के साथ रन संख्या 27 3.5। बेहतरीन फील्डिंग, शानदार क्षेत्र रक्षण खिलाड़ी द्वारा। हिनान मलिक 18 पे सामने, तजमुल बाबा 1-4 के 2 का सामना किया और ज़्यादातर स्ट्राइक मलिक के पास। तजमुल बाबा को उतना अवसर नहीं मिला है स्ट्राइक लेने का अगली गेंद मलिक के लिए। और हिनान मलिक बहुत बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं, वही पास में खेल करके तेजी के साथ दौड़ पड़े सीधे बल्ले से। बेहतरीन रणनीति, एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक बेहतरीन और शानदार सफलतापूर्वक ये पारी अब तक चली है टीम द रियल सुल्तान समरबुक की। 4 ओवर समाप्त, 28 बगैर नुकसान के। Seven and over they're going at the moment. They're happy to continue with Sam RPO runs per over. The required rate is going to be the important thing. They need to keep that in their mind while chasing 169. The importance of the chase you can understand. A team which will win today will advance. A team which will lose this game will be knocked out. And that's the importance of the chase here. Fresh over is about to start. Gawar Rashid is given the ball. Samir Bell is given the ball for the first time. Samir Bell ball 2 was none for 16 and ball is being passed on to Gawar Rashid. He's going to bowl for the first time in this game. Gawar scoring 8 by virtue 1-6. Now he's got the ball in his hand. He has a role as a bowler in the team, and those lusty blows at the back end, that is called the handiwork of batter, and he's known for that too. He has done that plenty of times for his team, coming up with those late cameos at the fag end. None for 28. That's the important thing. That's the good thing. The bright side of the chase. It's steady but unhurt. They are 28 without loss. It takes 4 overs to be there, with Tajamal Baba and Hinan in the middle, who found their form in the last game they played here. That was the 3rd league game, and today they are coming with the same form into the 4th one. Ball is a dot delivery. Hinan trying to play inside the line. For 28 without loss. 5th over first ball dot. As Gawar Rashid is getting ready, he has shown that intent. The fire is showing, the love for the game. The intent is there. And Gawar Rashid, not just aggression, but he has got some serious skills to mix it up. Yeah, sometimes you can go for runs. That isn't a big deal. We have seen that in that super over against the likes of Khalid Butt, where he lost his line completely. But sometimes you get defocused. You lose that momentum all of a sudden. That's why you can't get overcautious. You can't offer that. Well, look, this one is unplayable. Everywhere in the world, this is unplayable. Smile on his face, Hinan telling him, what is this? Gawar says, you know. Well, I just produced it. And you're the one who has to manufacture something special out of it. And you have to work on it. There is a message for the spectators. Kindly maintain discipline. This is the message for all the listeners and spectators, viewers over here. 28 without loss. Into the 5th over, 3 dots. Hinan will try to find a boundary here. Fielding. And look at that. It's a sprinter. Look at the response. He settles in with a return, a quick return in no time. The reflexes, well, you can't measure it.
The speed, wow. Picks it up in no time. He releases the ball. And that too perfect one, a flat return. Amazing and remarkable one. Talking about the skills of the fielder there. 29 for none. 169 to get. 9.13 and over is the required rate. Look, that's what I was talking about. Direct hit, it is direct hit, but to no avail in the end. I was talking about this lad. As a fast bowler is never easy. In the follow through, puts in a dive. Pouncing on the ball. It's 30 for none after 4.5. One last time in over number 5. Gawhar Rashid has gone for 2. Is it going to be a tight one again? A Heenan break free. What Heenan will do? He need a boundary here badly. And it was onto the pad line. Clipped away nicely. Just a single, he will keep the strike. 5 gone. 31 without loss. पांच समाप्त हो चुके हैं और 5 ओवर में 30 रन बने हैं। हिनान मलिक और तजम्मुल बाबा 31 बने हैं, क्षमा कीजिएगा, 5 ओवर में। और 6.20 प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रही है समय द रियल सुल्तान समर बुक। अभी भी 1 ओवर का आना बाकी। गौहर रशीद ने अपने पहले ओवर में 3 रन खर्चे। अच्छी बल्लेबाजी अब तक रही है, थोड़ा शांत धीमी ये बल्लेबाजी, ये धीमी पारी अभी तक चली है, पर विकेट सुरक्षित है, पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा टीम रियल सुल्तान समर बुक पे। तजम्मुल बाबा 5 गेंदों से, हिनान मलिक 25 गेंदों से 9.20 रिक्वायर्ड रेट, पर आपके पास 10 विकेट सुरक्षित। 6 ओवर की शुरुआत होने जा रही है। गौहर रशीद का 1 ओवर 3 रन। और यहाँ क्या दोहरा परिवर्तन किया जाएगा, ये डग आउट द रियल सुल्तान समर बुक का। और काफ़ी नज़दीकी निगाह इस मुकाबले में जो डग आउट में बैठे हुए खिलाड़ी हैं द रियल सुल्तान समर बुक के, और चिंतित भी नज़र आ रहे हैं। ये मुकाबला जीतना बेहद ज़रूरी है। ये बड़ा सुख सीधे हाथ में इम्तियाज लेफ्टी के, समीर बेल्लाए या घंटी बजाई विकेट की, और विकेट मिलता हुआ हिनान मलिक का पहली ही गेंद पर। तजम्मुल बाबा अथवा हिनान मलिक चलते बने। तेज स्ट्रोक जरूर था, पर इम्तियाज लेफ्टी के पास, उन्होंने कोई गलती नहीं की इस कैच को लपकने में, और पहला विकेट। ओ सीधे तेज स्ट्रोक जरूर था, पर इम्तियाज लेफ्टी ने गलती नहीं की, और समीर बेल को मिल गई यह सफलता। जीडी टाइटंस को मिल गई पहली सफलता। तलाश में थे काफ़ी समय से, निराश जरूर है हिनान मलिक, पर वापस लौट पड़े हैं, वापस चल दिए हैं अपने डगआउट की ओर। पहला विकेट गंवाया है द रियल सुल्तान समर बुक की टीम ने 31 पे 5.1 के बाद। सफल गेंदबाज समीर बेल ने अंततः अपने तीसरे ओवर में ये विकेट दिला दी जीडी टाइटंस की टीम को। और अब जाकर के नंबर 3 पे फाजिल रशीद संभवतः, ये देखने लायक होगा जब गौहर रशीद गेंदबाजी करेंगे, फाजिल रशीद सामने होंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टाकरा होगा गेंदबाज और बल्लेबाज का, क्योंकि गौहर रशीद विपक्ष की ओर से, यानी कि द रियल सुल्तान समर बुक की ओर से फाजिल रशीद, और गौहर रशीद जीडी टाइटंस की ओर से, और दोनों धर्मवीर 2 भाई इस टीम का, एक जीडी टाइटंस की ओर से और फाजिल रशीद द समर बुक रियल सुल्तान समर बुक की ओर से। तो ये बड़ा देखने लायक दिलचस्प टाकरा होगा। ये टक्कर होगी जहाँ एक तरफ जीडी टाइटंस के गेंदबाज गौहर रशीद, दूसरी तरफ द रियल सुल्तान समर बुक के बल्लेबाज फाजिल रशीद। फिलहाल समीर बेल गेंदबाजी कर रहे हैं 6 ओवर में, पर विकेट मिला। काफ़ी उत्साहवर्धित इस समय नजर आ रहे हैं खिलाड़ी, और बनता भी है यह उत्साहवर्धित वातावरण, क्योंकि विकेट मिल चुका है। और आरजे रफीक के साथ एक छोटे बालक एंजॉय कर रहे हैं उस संगीत का। 31 पे 1 5.1 ओवर की गेंदबाजी। तजम्मुल बाबा 2 पे सामने 5 गेंदों से।
और समीर बेल को पहले गेंद पर सफलता मिली। हिनान को चलता किया इम्तियाज, लेफ्टी के हाथों कैच करवाया। दूधिया प्रकाश में नहाया भाई, खूबसूरत बख्शी स्टेडियम, ऐतिहासिक मैदान और लेजर लाइट्स का भी इस्तेमाल, रंगारंग वातावरण है। 31 पे 1। फाजिल रशीद आए नए बल्लेबाज समीर बेलों के सामने गेंदबाजी में, और पहली गेंद पर एक विकेट की खुराक मिल चुकी है समीर बेल को। नई ऊर्जा के साथ वो आप गेंदबाजी करेंगे। पर बराबर दिलचस्प होगा, देखने लायक। फाजिल रशीद सामने होंगे जब गौहर रशीद गेंदबाजी करेंगे, तो ये ऐसे अवसर बहुत कम देखने को मिलते हैं। 2 बाई, एक टीम से दूसरा विपक्ष की टीम से, तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं। 31 पे 1। 5.2 के बाद फाजिल रशीद सामने, समीर बेल इस बार उड़ाया, पीछे दर्दिश को पाया और स्कोर बोर्ड पे विकेट नंबर 2 लिखवाया। और ये आत्मविश्वास, ये उत्साहवर्धित वातावरण इस बात की पुष्टि करता हुआ कि इस मुकाबले की महत्वता आज की शाम कितनी जरूरी है। फाजिल रशीद 0 पे 2 गेंदों का सामना किया, 31 पे 2। Despair, sadness, tensed moment for batter. Look at composure from fielder. Dardish batted for 50 and now takes that one, and look at the celebration from Sameer Bell. He's still going young. Age is just a number. He punches the air in delight, says, I'm the man of the moment. The man of the moment gets rid of the wicket-keeper batter, Faisal Rashid, the important one here to fall, and it's a massive blow. One big wicket for Global Dadoo Titans, and equally for the real Sultan Summerbugh. Unable to put premium on his wicket. It's the high time. It's the big stage and the bigger one, where you need to chase it down, and then you can make it to the next round. And if you lose this one, there is no opportunity for you guys to be in the tournament for the coming up Super 8 stage, where just one game is going to be the decider of your fate. And this one will already decide your fate. This one will come up with an answer this evening and tonight, that which one will advance and which one will head towards the quarterfinal. But in the quarterfinals, you know that Super 8 stage, you need one punch. Till the very last moment, you need a punch at one time. That too thumping. 31 for 2. Halfway mark in over number 6. Power play is underway. Nasir Ghanai is promoted up the order. To me, may be a good move, what I believe. But it's a tricky situation for batter like Nasir Ghanai. He's given an opportunity. Come up with a show here. Stick to basics. And that one, flick to that one, and that's gone all the way. Look at the power he generates. The timing placement is there. And this boy is going to be special this evening and tonight. Believe me, he can do wonders. But he has to adjust himself here. Well, that isn't enough. A 6. That doesn't mean you're done the job. You have to come up with something substantial. An innings solid like that of concrete, so that you come up with an example and tell your selectors that I'm the best choice and I'm the one who fits among the playing 11. 37 for 2. Power play is done, and that quality flick shot gone all the way for 6. That was the only highlights for the batting side in this over. Otherwise, they lost 2 of the batters. Look how he stopped the ball. This is the passion, the fire in his body, the spirit is very high. Sameer Bell, not just sweating it out here, he's going to give everything to it. Look how he stopped the ball.
knowing that it won't be easy to take a body blow. 3 overs, 2 for 22, and both the batters falling into his kitty, Fazil and Hinan Malik. Now it's up to Tajamul and Nasir to recover from that early dent or repair the damage which is already done. Tight power play. Required rate is still below 10. Not threatening. But this current rate, they need to up it a bit. It has to pick up a bit so that you're in with a chance here. Gawar, he wants someone outside. 30 on that portion of third man area. The one man drops down to the boundary. Now he's got 5 men outside ring to tackle that high flying ball in the outfield. 2 for 37. We're into the 7th over. Baba works it away nicely. That will bring Nasir on strike, finding 6 in that over of Samir Bell. Now he's got the pace. Samir, who was bowling with spin. That was the over from spinner. Samir Bell is a spin bowler, but Nasir can also use that pace of Gawar Rashid here. Now who will find the right position in today's game? Oh, that one, bat and pad close together. Scare on the on. This area is going to remain busy because these two, they often nudge it away, clip it away. Scare on the on. One more run, 39 for 2. 39 पे 2. 7वां ओवर बाबा और नासिर गनाई बीच मैदान में. बाबा ने 6 गेंदे खेली है, 3 रन बनाया. गनाई ने 7, 4 गेंदों से. और करंट रन रेट 6.16. रिकॉर्ड रन रेट 9.51. गफर रशीद दूसरा ओवर 5 रन खर्चे अब तक 1.2 ओवर में. इस ओवर में 2 सिंगल आ चुके हैं. तो आत्मविश्वास जरूरी, संयम जरूरी और धैर्य जरूरी इन दो बल्लेबाजों को, और एक साझेदारी भी साथ में जरूरी द रियल सुल्तान समरबुग को. और इस मुकाबले में जीत अर्जित करना भी दोनों टीमों के लिए जरूरी, पर किसके पक्ष में आएगी ये देखना होगा. 39 पे 2. बाबा हेड पे टकराई पर कोई अपील नहीं, सुरक्षित है, कोई क्षति नहीं. इस क्षमता इन दो बल्लेबाजों में है जरूर. वो किसी भी मैच का पासा पलट सकते हैं, पर यहाँ परिस्थितियाँ थोड़ी सी अलग प्रकार की. बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं है, और वो भी जब आप 2 विकेट गंवा चुके हैं तो दबाव यहाँ पे साफ है. वो अतिरिक्त दबाव इस समय दिख रहा है, और उस दबाव से निकलने का प्रयास करना है आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ. आपको बल्लेबाजी की आवश्यकता, वो अपनी जो क्षमता है उसके अनुकूल बल्लेबाजी करने की आवश्यकता द रियल सुल्तान समरबुग के इन दो बल्लेबाजों को. थोड़ी सी असमंजस की स्थिति, थोड़ी सी हड़बड़ाहट की स्थिति. तो जिमुल बाबा भी ठीक तरीके से गेंद को मिडल नहीं कर पा रहे हैं. ये समस्या रही है पिछले कुछ समय से इस मैच में जब से वो आए हैं. 1 रन और खाते में 40 पे 2. 7वां ओवर 169 टारगेट, 40 बना लिए हैं. 129 रन और बनाने हैं. काफी लंबा सफर तय करना है यहाँ से टीम द रियल सुल्तान समरबुग को. जेके सुपर सीमेंट प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025 प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस. 19वां मुकाबला, दूसरी पारी. जीटी टाइटंस की टीम गेंदबाजी करते हुए गनाई सफाई के साथ, खूबसूरती के साथ गेंद की पिच तक पहुंचना होगा, गेंद को पढ़ना होगा, गेंदबाज को पढ़ना है, विकेट को पढ़ना है, और फिर जाकर के स्कोरबोर्ड पे रन जोड़ दें. वो ज़रूरी भी है क्योंकि 9.80 तक रिक्वायर्ड रन रेट पहुंच चुका है. गेंदबाजी में बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा नासिर गनाई का, पर बल्लेबाजी में आवश्यकता है और दायित्व उनके कंधों पर, उस दायित्व को निभाना जरूरी. वो भूमिका आपकी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, योगदान आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है इस मुकाबले में. गैप में गई है गेंद, पीछे फील्डर हैं, छिटकी गेंद और ये निकल गई सीमा रेखा से बाहर. 4 रनों के लिए उपहार के रूप में चौका मिलता हुआ. 4 और खाते में, और 4 रनों के साथ रन संख्या में वृद्धि. यहाँ पे देख लीजिए, उतना ज्यादा ताकत से ये स्ट्रोक लगाया नहीं था, पर फील्डर के हाथ से गेंद छिटकी और सीमा रेखा से बाहर निकल गई. 4 रनों के लिए चौका, और नासिर गनाई और तजमुल बाबा को मिलता हुआ अपनी टीम द रियल सुल्तान समरबुग के लिए. 44 पे 2. 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं. 13 ओवर का खेल, 78 गेंदें अभी भी शेष.
और 78 गेंदों से इस मुकाबले को जीतने के लिए 125 रन और चाहिए। आरजे रफीक एंजॉय कर रहे हैं और इस टूर्नामेंट को और भी 4 चांद लगाने में जितना बाकी लोगों का योगदान है, दर्शकों का योगदान है, मैनेजमेंट का योगदान है, मैं समझता हूं उतना योगदान आरजे रफीक का भी। 7 समाप्त 44। 8वें की शुरुआत यहां पे किस गेंदबाज का चयन किया जाएगा? यहां परिवर्तन संभवतः गेंदबाजी में, ये परिवर्तन रंग लाएगा अथवा नहीं, ये देखना होगा। जीटी टाइटंस की टीम एक और गेंदबाज का चयन कर रही है, उनका कप्तान। ये देखते हुए, हालांकि अभी वसीम रजा का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वो बेहतरीन गेंदबाज है। थोड़ा गेंद पुरानी हो जाए और उसके बाद उनका इस्तेमाल किया जा सकता है अगले ओवर से संभवतः। विकास सिंह का इस्तेमाल गेंदबाजी में, आज बल्लेबाजी में मात्र 1 छक्का लगाया था उन्होंने और आउट होकर मैदान से बाहर चले गए, पर गेंदबाजी में अवसर मिला है तो क्या वो योगदान दे पाएंगे? क्या यहां से कुछ विकेट दिला पाएंगे अपनी टीम जीटी टाइटंस को? विकास सिंह नई गेंदबाज। 8वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। 7 के बाद 44 पे 2, 9.62 रिक्वायर्ड रन रेट, 6.29 करंट रन रेट। तजम्मुल बाबा 3 रन बनाए हैं मात्र 8 गेंदों से, शांत दिखे हैं। आज पारी का प्रारंभ करने आए थे हिनान मलिक के साथ। हिनान आउट होने के बाद वो पहले विकेट के रूप में, फिर फाजर रशीद आज खाता नहीं खोल पाए, वो 0 पे चले गए दूसरे विकेट के रूप में। और तब से नंबर 4 पे नासिर गनई ने ज्वाइन किया है तजम्मुल बाबा को। और ये पार्टनरशिप निभानी ज़रूरी है, योगदान ज़रूरी है। हर परिस्थितियों की डिमांड है और समय की भी डिमांड है। इस मैच को जीतना काफ़ी ज़रूरी दोनों टीमों के लिए। विकास सिंह नया ओवर, नॉर्दर्न पवेलियन एंड से। 44 अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद थी, नीची रहती हुई पड़ने के बाद। हालांकि तजम्मुल बाबा खड़े खड़े उस स्ट्रोक को खेलने का प्रयास किए थे, पर वो संपर्क नहीं हुआ क्योंकि गेंद काफी नीची रही थी, ऑफ स्टंप के बिल्कुल पास से गुजरती हुई। और ये देख लीजिए, ये भाग्य ने साथ दिया, गेंद स्टंप से नहीं टकराई, अन्यथा कहानी समाप्त हो सकती थी तजम्मुल बाबा के। कुछ बातचीत जरूर अपने साथी खिलाड़ी नासिर गनई से कि भैया थोड़ा आत्मविश्वास रखिए, काफी लंबा सफर तय करना है यहां से। फिर ऑफ स्टंप से बाहर, फिर अपनी जगह खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास, दूर से ही मारने का प्रयास, असफल यहाँ बल्लेबाज तजम्मुल बाबा का। और तजम्मुल बाबा अजी का समंजस की स्थिति में दिखे जरूर है, वो गेंद को मिडल नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि 10 गेंदें उन्होंने खेली और 3 मात्र रन बनाए, तो कल्पना आप कर सकते हैं तजम्मुल बाबा की इस पारी की। 7.2 44 पे 2, बाबा का योगदान जरूरी, उनकी पारी काफी जरूरी। इस बार कनेक्शन हुआ जरूर और गेंद चली गई वहां सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इम्तियाज डेफी ने हर संभव प्रयास किया था, वो असफल रहा और गेंद सीमा रेखा से बाहर। चौका मिला काफी देर के बाद, ये पहला चौका तजम्मुल बाबा के बल्ले से। इस चौके के साथ रन संख्या में वृद्धि। और इम्तियाज डेफी ने दौड़ जरूर लगाई थी, पर गेंद की गति उनकी गति से काफी तेज थी, तो 4 रन और खाते में। और 4 के साथ 48 पे 2, 7.3 ओवर की गेंदबाजी। 8वां ओवर, 3 गेंदों का आना बाकी। बाबा 7, गनई 11। विकास सिंह का पहला ओवर 3 गेंदों से 4। जे के सुपर सीमर रेड प्रीमियर लीग का 19वां मुकाबला, प्रेजेंटेड बाय अथवास, रिटेल अथवास विद कॉन्फिडेंस। हर एक बार फिर गति परिवर्तन चकमा दिया, हालांकि एक हाथ हैंडल से छूटा जरूर, एक हाथ से वो खेला हुआ स्ट्रोक पर संपर्क नहीं हुआ। कुछ अधूरे मन से बल्लेबाजी करने का प्रयास तजम्मुल बाबा का। 9.81 रिक्वायर्ड रन रेट, 1 चौका 3 गेंदों से आ चुका है। 4 गेंदें हुई हैं और 3 डॉट गेंदें, 1 चौका। इस ओवर में 4 रन विकास सिंह के। और विकास अच्छा खासा मिश्रण कर रहे हैं गेंदबाजी में, स्लोवर्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और पेस ऑफ डिलीवरीज का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। और जानते हैं इस विकेट पे जो विकेट की डिमांड है, जो विकेट का व्यवहार है, उसके अनुकूल वो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। 48 पे 2 विकास। एक बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर, स्ट्रोक खेला जरूर, सिंगल मिल जाएगा। वसीम रजा उस ओर तैनात है,
जब तक वो लॉन्ग ऑफ क्षेत्र से आकर के गेंद को फील्ड करते। 1 रन और खाते में 49 पे 2। 8वें ओवर में अंतिम गेंद का आना बाकी। द रियल सुल्तान समरबुक और ग्लोबल डडू टाइटंस, हालांकि दोनों अपने पिछले 2 मुकाबले हारे हैं, 1 मुकाबला जीता। ये आखिरी मुकाबला है, डू और डाई की सिचुएशन इस मुकाबले में। 49 पे 2 आखिरी गेंद। नासिर गनई 11 पे। उनचास पे 2, 7.5। ये बड़ा है और ये काफी दूर है। इस छक्के की आवश्यकता भी थी, वो मिला अंत से। नासिर गनई के बल्ले से निकलने वाला ये छक्का। बस 17 पर पहुंच गए। 55 पे 2, 8 की समाप्ति। बड़ा स्ट्रोक। ओवर पिच गेंद खूबसूरती के साथ लॉफ्टेड स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के ऊपर। 6 मिल गए यहां पर नासिर गनई को और इस प्रकार से 8 के बाद 55, 2 विकेट के नुकसान पर द रियल सुल्तान समरबुक। आठ ओवर की गेंदबाजी और पिछली गेंद पर वो बड़ा स्ट्रोक नासिर गनई के बल्ले से। पर नासिर गनई और तजम्मुल बाबा दोनों विस्फोटक बल्लेबाज हैं, महान खिलाड़ी हैं, अनुभवी खिलाड़ी हैं, दिग्गज बल्लेबाज हैं। यहाँ उस दिग्गजता का इस्तेमाल करना, उस अनुभव का इस्तेमाल करना और इन परिस्थितियों में बल्लेबाजी करना, तो मैं समझता हूँ ये आपकी महानता हो गई द रियल सुल्तान समरबुक के लिए। और वहीं पे जीडी टाइटंस के गेंदबाजों का हर संभव प्रयास कि अंडर चेक रखा जाए इन 2 बल्लेबाजों को और फ्रीली उन्हें रन बनाने का अवसर ना दिया जाए और हाथ खोलने का अवसर ना दिया जाए, क्योंकि एक बार ये दोनों बल्लेबाज अपनी लय में दिखे तो फिर कहानी में पलटवार आ सकता है। वो कहानी पलट सकती है यहाँ। और अब जाकर के वसीम रजा, जो हमने जिक्र किया था कि अगले ओवर में संभवतः वसीम रजा का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकर के आए 9वें ओवर में। विकास सिंह ने अपने पहले ओवर में 11 खर्चे, 55 पे 2, 8 की समाप्ति। 9वें की शुरुआत रजा और ये 4 ओवर काफी महत्वपूर्ण। Important 6 coming. Nasir on 17 of 7. He's from Trikanjan, Baramulla. A beautiful place, has produced versatile all-rounder. It's the night. Fight it out with right intent. Keep your side in the chase. People often watch you guys come up with an innings that will be remembered. On the other side, Wasim Raza, who's got the experience of ages, what he will do against tall lanky Baba. 2 for 55. Look, Baba, he is a hard hitter of cricket ball. He thought that it's the ball in my radar, but look at that little turn and offer. It did change a bit, and Baba was surprised. It somehow keeps it away. He was shaping for that lofted shot and changed his mood in the very next second and keeps it to mid-on area. 2 for 56. Who will prevail? 2 for 56. Nasir Ghanai launched that one. It's aerial and it's out of here. The promotion is coming handy at the moment. It's working at the moment. Well, we can't be rest assured, or the team can't be rest assured, because Nasir Ghanai is another good hitter of cricket ball with bigger boundaries on and long off area. It won't be easy to clear the boundary time and again. A 6, that is handy, that's much needed. And there was an opportunity, and look at Raza, he's unhappy with wicketkeeper Sarshil Abbas. There was an edge that gone down, a chance gone begging. Nasir Ghanai gets the lifeline. He's breathing again. Wasn't easy. That isn't easy. Never easy to hold on to the ball like this. The next one is again, he's got the power. He's got the energy. We'll try to energize in between. But that shot, that was 6 number 3. He has that class, come caliber. As a batter, you have to prove that here. Well, every day you won't get a flat or the slow surface where you can wait for the ball and just hit it through the line.
You have to adjust under different circumstances, and you will be having different turf wickets or the pitches available in different parts of the country. So that adjustment makes it important for a batter, and you can only be mature with the passage of time if you learn the basics of the game. And as a batter, as a superb all-rounder, you have to find those things, how you can equip and enhance yourself or yourselves. Now Baba is getting a message from dugout what to do. He's feeling caged at the moment. He's in a kind of a captive mood. He's yet to break free. One of 5 needed from 66 ball. "64 for 2. Baba in the middle. Now he has to change his gears. Vikas back for the second over. And it beats Baba again. The right-hander isn't feeling the length at ease, and the bowler is teasing him all along. What we have seen in other over and in this over starts away the teasing line again. It's holding up a little bit in surface. It's a two pacey again. 2 for 64. We're into the 10th over. Vikas in a second over. None for 11. In search of one here. Baba and Nasir, they're fighting it out at the moment. They're sailing in the boat which needs a captain of that tremendous quality and character which will keep it afloat within the tides. Need strength of next level. 2 for 65. Into the 10th over. Nasir on strike. First 2 balls yielding a single. The next 4 balls, Nasir is on strike. Was on to 24 of 10 balls. Earlier chance gone down. Wicketkeeper Satchil unable to hold on. Because this one, Nasir doesn't middle it properly. And that's the beauty of Vikas Singh. He knows how to mix it up, how to balance. Balancing things, that is pivotal right at the moment. In a game like this, where you are 8 wickets away and other side is 103 behind. So both the teams need nerves of steel to prevail. The required rate is still below 10 and over. That is gettable. It's chaseable. And you can approach it. Just a single. They're happy to concede. Batters need to rotate. At least if boundaries are not coming, you have to look for 6 singles each and every over. And in between you can look for 1s and 2s. Once you do that, that won't let the other side make plans. Won't allow a bowler to weave that web. And it will never help him and let him come up with a magical delivery of the magical wand, and he can't keep you tight and under check time and again. It's 1 for the over. Slower bouncer from Vikas Singh there. It's 1 for the over. It also surprised the batter. Nasir Ganai wanted a wide, but umpire says it's 1 for the over, so he can't bowl the next one. I was talking about the 2 batters. They need resilience. But in the meantime, they need to up the tempo. It's gone on to now 10.03. It's gone past to 10 and over. You have to look for runs. On the other side, bowlers will find a way to tease you, unsettle you. As Vikas, the way he bowled in today's game,
Thus far, he's been effective. Conceded a boundary right now, and that will take the score to 71 for 2 after 10 overs. Healthy boundary coming, and it was a kind of a delivery where Nasir is going to latch on. So does he. That one, pull comes into play. The power he generates hardly allows anyone to come in and stop the ball. And look, that one races away, and long on fielder could never think of getting there and dragging this one back into the play. So we're done with over number 10, halfway stage, halfway mark. Time for drinks in the middle. They're still 98 behind from 60 balls with 8 wickets in hand. That is the plus point. They have 8 batters in kitty, in hand, in control, and 10 overs to go. This is the important passage of play. The next 10 overs will tell us, and we shall come to know which way the game will go. And Sarshil is having some issues with his right foot. There is limping on the field, and team is in a hurdle for a while. Time for drinks. We also need a kind of breather. Back live again. 98 needed in remaining 10 overs, 60 balls, and they're 98 behind with 8 wickets in hand. That will boost their confidence. They will be hoping against hope. A sigh of relief. And few glimpses are going to be left in the kitty. They will feel that they have an edge over the other side, but need to up the tempo a bit here. Looking at the required, looks still in control, but who knows, it may go past 10-11, then it won't be easy. Fresh over first ball. Baba is batting deep in crease. He's waiting for
deep increase for each and every ball. He's not hurrying at the moment. He doesn't hurry at all. That's a good sign of Baba, but he has used it. 20 balls for his 30. Now he has to mix it up a bit. 72 for 2, 97 behind from 59 balls. 1.1, none for 10. Nasir back on strike. That's the good part. That's the better thing. Oh, that one with a straight bat. What a shot. Lovely, fair and lovely. The Trikonjan boy comes up with another 6. And this one is special one. Go through this one again. Wow. The style, class, balance, excellence is there. What a 6. Is he going to carry on and continue? What a night. Is he going to be the man of the night? 91 behind from 58. That's a good delivery. Good one from Raza. Keeps it away. He knows that anything in his arc where he can break free, he has that energy and power to clear the rope with ease. But that shot, that is just telling us the boy coming from that tower of mountains, he has that ray of hope, that instinct. And he has that habit, but he has to develop it and persist with that character of dealing with the pressure like situations. Why to kill the chase? He has to learn it. But today the good thing about the batting unit is to promote him. He's batting with Baba at number 4. That's a good thing. That's the good sign of a proper management. The good call from Feroz Butt and the rest of the pack. A single accrued. Takes it to it's 80 for 2. We are in over number 11. 89 behind from 56 balls. He's gonna hit that one. It's away. It's beyond the boundary line. And this is Valley's very much own Valley. At its very own best with another 6. 6 number 2 of the over. Overall 6 number 5. For Nasir Ganai. Well, this man is bringing his team back into this one. Once again, goes hard at it, outside edge. Umar Malik. He need to be quick there. Gets to the ball. And look at the running between the wickets. And they steal third one here. 80 needed from 54 balls. 9 overs and they need 80. And this big over. 6-6 makes it 12, 13, 14, 15. And then 3 makes it 18 of the over. And Raza all of a sudden 2 overs, none for 27. And Nasir Ganai on to 45, 17 balls. Boy from Woods to the shores of Baramulla. And from Baramulla to the different parts of the valley. From this part of the world to the other province of J&K. He has proved his mettle. But this one is going to be the great knock and innings of his life. And this settler show should go on. It must go on tonight. Because this lad has to prove his mettle for the first time. It is an occasion where he has to keep his side in the hunt, in the contention. And in a tournament like this, where people are here to judge you, they're observing your talent, what you have in its abundance, in depth. He has an opportunity here. But on the other side, bowlers need some quick and terrific, calm, tight overs to bring things back on track. What will happen? Nazir is here to tell you the story in coming overs. 89 पे 2 11 ओवर की समाप्ति। मैं आपसे सहमत हूं। हालांकि योगदान गेंदबाजी में दिया है, बल्लेबाजी में कई अवसर मिले, पर पूरी तरह से फ्लॉप रहा ये बल्लेबाज। और आज जब अवसर मिला तो पूरी तरह से अपने आप को यहाँ प्रूव करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी 80 रन दूर है 54 गेंदों से। ये आसान परिस्थितियाँ नहीं है, भारी बड़ी खेलनी होगी नासिर गनाई को।
वो 18 से 45 पे नाबाद हैं, पर आज बेहतरीन बल्लेबाजी की है। पर इस बेहतरीन बल्लेबाजी को और बेहतर करना है तो फिर आपके हित में बेहतर होगा। 89 पे 2 12वें ओवर की गेंदबाजी और यहाँ जीडी टाइटंस को एक विकेट की तलाश। हालांकि 2 विकेट जरूर मिले। उसके बाद तजम्मुल, और तजम्मुल बाबा हालांकि थोड़ा सा शांत आज खेले हैं। आज अलग प्रकार का उनका व्यवहार दिखा है, वो अलग प्रकार के रंग में दिखे हैं, पर मैं समझता हूँ बेहतर बारी उनने खेली है। 21 गेंदों से 14, एक छोर से, क्योंकि जानते हैं दूसरे छोर से अटैकिंग क्रिकेट खेला जा रहा है, फील्डिंग कमाल की, पर दूसरे छोर से नासिर गनई जब आप इस प्रकार से विस्फोट कर रहे हैं तो फिर आवश्यकता नहीं है दूसरे छोर से अटैकिंग क्रिकेट खेलने की। अच्छी रणनीति दोनों बल्लेबाजों की। एक छोर से नासिर गनई विस्फोटक अंदाज, दूसरे छोर से तजम्मुल बाबा थोड़ा आत्मविश्वास। तो कुल मिलाकर 89 पे 2, 11.2 के बाद अगली गेंद। इस बार ऑन साइड में सिंगल मिल जाएगा। 1 रन और खाते में, और 1 रन के साथ रन संख्या 90 तक पहुंच चुकी है। और अब 89 की आवश्यकता 51 गेंदों का आना बाकी, 8 विकेट सुरक्षित, पर इस साझेदारी को और बेहतर करना जरूरी है। समीर बेल का ये तीसरा ओवर, 3.3 ओवर 2 विकेट 23 रन दे करके। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि अब तक की दोनों विकेट समीर बेल के खाते में, और किसी भी गेंदबाज को सफलता नहीं मिली है। नीचे रहती हुई गेंद पर खूबसूरती के साथ उसको ड्राइव किया। 1 रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। सिंगल मिल जाएगा। इरफान मीर उस ओर हैं और 1 रन से ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। अच्छा क्रिकेट, बेहतरीन क्रिकेट इस खिलाड़ी द्वारा। और तजम्मुल बाबा उनका सहयोग करते हैं 15 पे 22 गेंदों से। 20 मात्र गेंदें खेली है नासिर गनई ने। 46 रन पे नाबाद है, 4 रन दूर अपने अर्धशतक से, लेकिन उससे ज्यादा कहीं महत्व इस पारी के, इस पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट करना, अंत तक खेलना, बेहतर तरीके से इस पारी को फिनिश करना, मैं समझता हूं वो आपकी बड़ी उपलब्धि हो गई इस मुकाबले में द रियल सुल्तान समर बुक के लिए। 91 पे 2, 50 गेंदों से 78 चाहिए। इस ओवर में 2 डॉट, 2 सिंगल, 4 गेंदों से 2 रन। समीर बेल ने अच्छी गेंदबाजी की है। हवा में गेंद, उस ओवर फील्डर हैं तैनात। सफाई के साथ इम्तियाज लेफ्टी ने गेंद को फील्ड कर लिया। सिंगल मिल जाएगा यहाँ पर बल्लेबाज को। 1 रन और खाते में, और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि। अंतिम गेंद का आना बाकी, 49 गेंदों से 77 रनों की आवश्यकता। यह संघर्षपूर्ण मुकाबला, 19वां मुकाबला जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025 प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस आज बल्लेबाजी में दिखा है नासिर गनई के। अगली गेंद इस बार बाबा लीजिए, डिपॉजिट कर दिया स्टैंड्स में। एक और छक्का तजम्मुल बाबा के बल्ले से निकलने वाला यह स्ट्रोक काफी समय के बाद। ये क्लीन हिट और 6 रन अर्जित किया अपने लिए, अपनी टीम के लिए तजम्मुल बाबा ने। कमाल की बल्लेबाजी ये उनकी रेंज में। और फिर तजम्मुल बाबा सीधे इसको डिपॉजिट करेंगे स्टैंड में, जो किया उन्होंने। 6 अर्जित किए, ओवर की हो गई समाप्ति। और इस प्रकार से द रियल सुल्तान समर बुक की टीम धीरे धीरे से उस लक्ष्य तक सफलतापूर्वक पहुंचने का प्रयास। 12 समाप्त, 98 पे 2, 8 ओवर में 71 चाहिए। बाबा 21, नासिर गनई 47। 98 पे 2, 8.88 रिक्वायर्ड रन रेट, 8.17 करंट रन रेट। और अब जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 9 से नीचे का 8.88 तक गिर करके पहुंच चुका है। समीर बेल 4 ओवर 31 रन 2 विकेट, उनका कोटा पूरा हो चुका है। वसीम रजा ने 2 ओवर में 27 रन खर्चे हैं। गफर रशीद ने 2 ओवर की गेंदबाजी की है। इम्तियाज लेफ्टी ने 2 ओवर की गेंदबाजी की है। और उसके अलावा विकास सिंह ने भी 1 ओवर की गेंदबाजी की है। तो आपके पास विकल्प हैं गेंदबाजी में। और दूर उस छोर देखा जाए नॉर्दर्न पवेलियन एंड टीम ऑनर अहमद फैरोज भट्ट हालांकि अभी भी चिंतित नजर आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर देखना होगा ये मुकाबला द रियल सुल्तान समर बुक के पक्ष में जाएगा या फिर जीडी टाइटंस के। इक्वेशन आंकड़ा 48 गेंदों से 71 की आवश्यकता। द रियल सुल्तान समर बुक को बाबा सामने और इम्तियाज लेफ्टी करेंगे गेंदबाजी। 2 ओवर 9 रन। पहली गेंद पर स्ट्रोक लिया, हवा में गेंद पर पीछे फील्डर है, सुरक्षित जरूर। लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात, सिंगल मिल जाएगा। 1 रन और खाते में। 99 पे 2, 12.1 ओवर की गेंदबाजी। 47 गेंदों से 70 रनों की आवश्यकता। पर ये पार्टनरशिप बहुत बढ़िया। और जब आप छोटी छोटी साझेदारियां निभाते हैं, छोटी छोटी तिगड़ियों में सेशन बाय सेशन पारी को लेकर के चलते हैं, तो फिर परिणाम आपके पक्ष में आ सकते हैं। वो कोशिश यहाँ जरूर की है। बाबा 21 पे 48, नासिर गनई सामने तजम्मुल बाबा 21 पे। और नीचे रहती हुई गेंद, स्ट्रोक ऑफर जरूर किया था पर पड़ने के बाद बिल्कुल नीचे रही है। उत्तरी उछाल थी नहीं गेंद में बिल्कुल भी। और गेंद विकेट कीपर का दस्ताने में। स्टंप्स बिखेरे सुरक्षित क्रीज में। एक और डॉट गेंद। 46 से 70। 99 पे 2, 12.2 ओवर की गेंदबाजी। 13वां ओवर इस समय। बाबा सामने। इम्तियाज लेफ्टी बाएं हाथ से एक बेहतरीन गेंदबाज है।
एक बार फिर भाग्य ने साथ दिया, बल्ले से अंदरूनी भाग लेने के बाद गेंद पैड से टकराई, ऑफ साइड में चली गई, दौड़ करके रन तो पूरा जरूर कर लिया। बाबा पहुंच गए 22 पे, सामने नासिर गने 48 पे, 2 रन दूर अपने अर्धशतक से। ऐसे समय में यह अर्धशतक आया। आज गेंदबाजी में कमाल का प्रदर्शन, 3 विकेट संभवतः उन्होंने प्राप्त किए थे, और बल्लेबाजी में आज बहुत ही बेहतरीन। और उनका आज बल्लेबाजी ऑर्डर चेंज किया गया था, उन्हें प्रमोट किया गया था। हालांकि आमतौर पर नंबर 6-7 पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं, पर आज उन्हें नंबर 4 पे बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, और ये स्थान उन्हें रास आया है। और अपना स्थान पक्का करने के लिए निश्चित तौर पर इस प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता। 99 पे 2, गनई 48 पे, नासिर गनई इस बार बड़ा स्ट्रोक, पर 1 रन जरूर मिल जाएगा। क्या दूसरे की मांग होगी? जी नहीं, 1 ही रन मिलेगा। पीछे फील्डर तैनात है, सिंगल के साथ ही संतोष। दोनों बल्लेबाज 49 पे, नासिर गनई नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे, और 100 रन पूरे होते हुए 12.3 ओवर की गेंदबाजी में 100, 2 विकेट पे, और यहां से 69 रन चाहिए 45 गेंदों से इस मुकाबले में। बाबा 22, इम्तियाज लेफ्टी, अनुशासन, पैनापन, क्या खूबसूरत गेंदबाजी उनका रहा है अब तक इस स्पेल की अगर बात करें। 2.4 में मात्र 12 रन। इस बार बाबा ने फिर अच्छा स्ट्रोक खेला, सिंगल मिल जाएगा, 1 रन और खाते में। 101 पे 2, 12.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद हिनान मलिक और एक और खिलाड़ी आउट होकर मैदान से बाहर, गौहर रशीद के भाई फाजिल रशीद आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। 2 विकेट मिले हैं। उसके बाद से ये पार्टनरशिप, ये साझेदारी कमाल की, और एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा कर दिया टीम को जहां से निश्चित तौर पर वो जीत तक पहुंच सकते हैं। ऑफ स्टंप से बाहर उड़ता हुआ स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी तैनात वसीम रजा, और यहां पे रन मिलता हुआ 102, 2 विकेट के नुकसान पे ओवर की समाप्ति। और इसके साथ ही नासिर गनई के 50 पूरे 24 गेंदों से 50 रनों की बेहतरीन अर्धशतकीय पारी, लाजवाब पारी, आकर्षक पारी नासिर गनई के बल्ले से, ऐसे समय में जबकि टीम को आवश्यकता थी। रिक्वायर्ड रन रेट 9.43, करंट रन रेट 7.92, 24 गेंदों से 50, 2 चौके, 5 छक्के, 208 का स्ट्राइक रेट। कमाल की पारी। और यहां से अगले 8 ओवर का खेल बचा है, अथवा 7, ये देखना होगा 7 ओवर का खेल संभवतः, जी हाँ 7 ओवर का खेल बचा है, यानी कि 42 गेंदें बची हैं, और 42 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए देखना होगा 66 रन बनाने हैं। 103 पे 2, 13 समाप्त। Brilliant knock from Nasir Ghanai. Well composed. And that's why the real Sultan Summerbugh brought him. The way he was bought. Everyone was talking about that. What's the role of Nasir in the side today? He answered with a wonderful batting and bowling. Now look, he comes forward, he gives himself charge. Bang it in short, good delivery from bowler there. And Nasir finds his man to perfection in the end, just a single. 65 behind from 41 balls. Tricky chase. Batting unit up, 8 wickets intact. Desperately need one here. They need to get rid of the partnership. Baba decided to play that second fiddle. He gave an ample time to Nasir as he decided to strike. That one, it's aerial. There is a man. Will he take this one? He's taken. And it goes into the hands. Was backpedaling for a while. Little backpedal from the man there. I thought it won't carry, it won't land in the safe hands. In the end, it's Tajamal Baba who's gone here. The wicket drought comes to an end. It's Vikas Singh who breaks the stand wide of the off, and Baba trying to break free. He gone hard at it. I think that was the good way to keep it away. Now Baba telling Nasir, you stay there, you stay there. And that is what keeps a unit tight and together. Telling him that I'm gone, I was unable to flourish, but it's now up to you. You have to take the responsibility. And that's the beauty of game of glorious uncertainties and the cricket.
Look at Unitas. People from different parts, from different areas coming together. They develop a same taste for a club, for a team. They come up as a unit together. Everyone achieves more. 65 from 40 balls. And they are still 65 behind. 104 for 3. And that wicket after ages. 2 wickets coming in quick succession. We saw 2 wickets in no time. Fazil. And the first one to go for Real Sultan Summerbrook, that was Hina and Malik. And now these two studied the ship and kept them in the hunt and in the chase, and they did really well. And one would love to praise, and people will definitely come up with good words, and they will come up with assisting feedback as the two men decided to stand tall, and they stood tall and displayed that character and the settler run with the bat. That partnership at one stage looked like that they're not keeping their hopes alive. They are just fighting the time in the middle. They can't afford 2-minute dot balls. They were chipping in dots. They were chewing like chewing gum. But what a turnaround from Nasir Ghanai. 51 of 25 balls, batting with a strike rate of more than 200. He has lit up the center. And there is a shout, and up goes the finger. That's a huge one. It's a big fish. Massive one for Vikas Singh. In the same over, Samir Bell earlier on did the job for his team, picking up 2 wickets inside and over. Now Vikas, he has picked up a most important wicket in today's game, and tonight that's Nasir Ghanai. And look at the celebration. It's a massive breakthrough. The delight, the celebration, the joy is telling, and that celebration that breaks out after that fall of wicket. Wow, that was something you can't explain it. Unimaginable. Vikas Singh gets his man. Second one to Vikas in the same over. We've seen twice this happening to the Real Sultan Summerbrook team. The earlier on it was the wicket of Hinan. And in the same over we saw the back of Fazil, who gone without scoring. That was the golden duck in today's game. And in this over we've seen 2 of the batters, both the set batters and the partnership, not just the partnership, broken. He has picked up both the set batters. Things are getting worse in the middle for the batting unit. The damage is once again done to great extent. Edie and Sajjad Ghanai. It's a fresh pair. Now they need to look for runs and to keep wickets intact. Well, they can't let it go other way, as it is going to be a tricky one. And I can see that the owner of Real Sultan Summerbrook Club is looking concerned beyond the boundary line. He's restless at the moment. One can see that our cameraman isn't showing that possible angle. But I'm telling you, that's the love for the game. Look how people are attached to this, how connected, what kind of a touch they're feeling. They're attached to it. How the emotions of people are attached to it. You can see that the owner of Real Sultan Summerbrook has got his management over there. They're all looking restless at the moment as things change drastically. Nasir Ghanai got overcautious, was man of the moment, played that wonderful knock of 55. Can't continue and carry on. He needed to bat till the very last moment. Well, I often speak these words. People sometimes come up with comments. They talk about it.
Why you say this and why you often use this? Well, a great cricketer and the great athleticism is all about never give up. You have to fight it out till the very last moment. As people have expectations with you, as I mentioned it, there is a lot of attachment to it. And it is, have you heard that response to stimuli? And that is the cricket doing at the moment. Look at that touch. The people are feeling beyond the boundary line. Nobody is ready to move away. They are stick to their seats at the moment. They're on edge of their seats, on their toes, loving the game of cricket. And the management is restless at the moment. One can feel that. And it's 63 away from 37 balls. It would have been a great show. Would have been an innings that would have made his name in the valley had Nasir been there till the very last moment. Getting overcautious, that isn't important. You have to be at your level best. You have to prove your mettle all the time. Try to understand. People are watching you. People want your performance. They're here to praise you, and there is a chance which gone begging. Catch gone down, should have been taken. An important catch put down by the man there. That should have been taken, Azir, and talking about that catch, it would have changed the complexion of the game. It's 62 needed. Thank you, sir, for your love and sport. We can say that back home I got a good sport there, and people are there to support us. Thank you very much. And from our side, it's Assalamu Alaikum and thank you very much. Coming back to the game, Nazir, would have been one more wicket down, would have been third one in an over. And that's what cricket is all about. It's a game of nervous, it's the game of passion, it's the game of patience, and it's the game of glorious uncertainties. Those who complain, look at the game, how it changed. It is swinging to and fro, and the pendulum is swinging wildly back and forth. One can't imagine and one can't guess how the things are changing. In a matter of seconds, in a space of 2 or 3 balls, in an over, it's over to you. धन्यवाद मनवर। और कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट ज़रूर आता हुआ इस समय। नासिर गनई आउट होकर मैदान से बाहर चले गए, उससे पूर्व उनके साथी खिलाड़ी तजमुल बाबा, और एक ही ओवर में विकास सिंह ने 2 सफलताएं प्राप्त की। 3 ओवर 22 रन 2 विकेट। कमाल का ये ओवर रहा। 6 ओवर का खेल शेष, 62 रन चाहिए जीत के लिए। यहाँ द रियल सुल्तान समरबुग को सजाद गनई 1 पे और ईडी उनके साथ 2 पे। नाबाद 7.64 इस समय करंट रन रेट, और रिक्वायर्ड रन रेट अब 10.33 तक पहुंच चुका है। तो परिस्थितियां थोड़ी गंभीर होती हुई रियल सुल्तान के लिए। पर यहां से देखना होगा क्या अगले 6 ओवर में 62 रन बना पाएगी द रियल सुल्तान समरबुग की टीम अथवा नहीं। बड़ा चुनौतीपूर्वक ये मुकाबला रहने वाला है, एक संघर्ष जरूर मुकाबले में। और ऐसे में 36 गेंदों से 62 रनों की आवश्यकता। विकास सिंह 3 ओवर 22 रन 2 विकेट। नेवर की शुरुआत। और मंसूर अजीज का धन्यवाद करना चाहेंगे, थैंक यू वेरी मच इस लाइव प्रसारण का हिस्सा बनने के लिए। हमारे एक सहयोगी भी हैं, इस टीम का हिस्सा भी हैं, एक मुख्य सदस्य हैं, थैंक यू वंस अगेन। और यहाँ मुकाबले की बात करते हुए 36 गेंदें 62। नेवर की शुरुआत। गौहर रशीद ने एक और ओवर प्रारंभ किया अपनी टीम ग्लोबल डाडू टाइटंस के लिए। यह तीसरा ओवर उनका 2.1 ओवर 9 रन, 107 पे 4, 14.1 के बाद 62 चाहिए 35 गेंदों से, 6 विकेट सुरक्षित। ईडी सामने 2 पे। और क्या अब ईडी और सजाद गनई यहाँ पे कुछ बेहतर कर पाएंगे अपनी टीम द रियल सुल्तान समरबुग के लिए? देखना होगा। एक संघर्ष और एक रोमांचक स्थिति वाला यह मुकाबला, 19वां मुकाबला इस समय जे के सुपर सीमर रेड प्रीमियर लीग का। ऑफ साइड में तिरछे आड़े बल्ले के साथ गैप में गेंद को खेला है, पर पीछे फील्डर तैनात है। सफाई के साथ वो फील्ड कर नहीं पाए, दूसरे प्रयास में थ्रो किया फील्ड करने के बाद, पर दोनों बल्लेबाजों ने कुछ रन जरूर बटोर लिए। और ऐसे में रन संख्या में वृद्धि होती हुई 109, 2 रन और खाते में, 4 विकेट पे 14.2, 10.59 तक रिक्वायर्ड रन रेट पहुंच चुका है। और ये एक एरिया ऑफ कंसर्न जरूर रहेगा। 34 गेंदें 60 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। द रियल सुल्तान समरबुग बनाम जीडी टाइटंस के बीच यह संघर्षपूर्ण मुकाबला ऐतिहासिक बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में चलता हुआ
यहाँ पे रन लेने का प्रयास था पर शानदार फील्डिंग, रन लेने का अवसर नहीं दिया क्षेत्ररक्षकों ने। 33 के 2 से 60 की आवश्यकता, 109 पे 4, 14.3, 15वां ओवर। और एक आकर्षक फील्ड प्लेसमेंट बाएं हाथ के बल्लेबाज ईडी के लिए जो 4 पे नवादे 5 गेंदों से। दबाव में जरूर होंगे पर दबाव में पारी खेलनी है तो फिर वो आपकी महानता होगी, वो आपकी कला होगी, वो आपका योगदान होगा। इस बार बड़ा स्ट्रोक उठा करके मारना चाहते थे सीधे सामने की ओर, पर संपर्क नहीं हुआ। पड़ने के बाद गेंद ने हल्का सा उछाल लिया और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। एक और डॉट गेंद। और इस ओवर में अब तक मात्र 2 रन आए हैं। 32 गेंदें 60 रनों की आवश्यकता, 109 पे 4। यह कहानी अभी भी एक खुली किताब की तरह, क्या कुछ होने वाला है इस मुकाबले में हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। 60 चाहिए 32 गेंदों से, 109 पे 4, 14.4 ओवर की गेंदबाजी। द रियल सुल्तान समरबुग 169 बनाने हैं इस मैच को अपने नाम करने के लिए और इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। और वहीं पे जीडी टाइटंस को रोकना होगा, विकेट 6 प्राप्त करने होंगे, 60 रन बनाने और वो 60 रन रोकने होंगे यहाँ पे। क्या इसमें सफलता मिल पाएगी? अपील, अब वहां बोल्ड हो गए हैं, संभवतः ऐसा लगा कि शायद पैड पे टकराई, जी नहीं, गेंद सीधे स्टंप्स पे। ईडी सॉफ्ट बोल्ड, तो थोड़ा दुविधा की स्थिति में थे, अंततः अपना विकेट गंवाया। और ऐसे में 5वां विकेट गंवाया है। ये देख लीजिए, विकेट मिलता हुआ गवर रशीद को ये सफलता मिलते हुए जीडी टाइटंस ने 5वां विकेट प्राप्त कर लिया है। ये इस क्रिकेट की खूबसूरती, ये क्रिकेट की महानता। और कब पासा पलटेगा ये कोई कल्पना नहीं कर सकता। 7 गेंदें खेली, 4 रन बनाए ईडी ने, गवर रशीद ने बोल्ड किया और निराश कदमों के साथ वापस पवेलियन लौटते हुए। 60 अभी भी चाहिए 31 गेंदों से। इस ओवर में मात्र 2 रन 1 विकेट, गवर रशीद को यह पहली सफलता। साठ रनों की आवश्यकता 31 गेंदों से। सजाद गनाई एक पे, पर यहां एक बार फिर ये पासा पलटता हुआ, हालांकि अभी भी कुछ कहना संभव नहीं है। साझेदार आए नए बल्लेबाज, वो क्षमता है उनमें बड़े स्ट्रोक की, वो कला उनमें है, वो प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं। गेंदबाजी से तो अपना दायित्व निभाया, पर बल्लेबाजी में दबाव भी है, दायित्व भी है और भूमिका भी निभानी है। तो क्या यहां से साझेदार और सजाद गनाई और सुल्तान कुछ कर पाएंगे, ये देखना होगा। बेहतर गेंद थी और ये सेलिब्रेशन था गवर रशीद का, ये रिएक्शन था विकेट लेने के बाद। और क्यों ना हो, क्योंकि एक विकेट और प्राप्त कर लिया है जीडी टाइटंस की टीम ने। संघर्ष था इस मुकाबले में बने हुई। 31 गेंदों से 60 की आवश्यकता, 109 पे 5, 14.5 ओवर की गेंदबाजी। साझेदार नए बल्लेबाज, फील्डिंग में परिवर्तन और हर पल उत्साहवर्धित यह मुकाबला, हर गेंद के साथ उत्साहवर्धित यह मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में साझेदार सामने नए बल्लेबाज नंबर 7 पे, 11.61 तक रिक्वायर्ड रन है। विकेट पिछले 2 ओवर में 3 गिरे हैं, पिछले ओवर में 2, इस ओवर में 1, तो कुल मिलाकर पिछले 2 ओवर्स में ये 3 विकेट। इस बार स्टेप आउट करके बाहर निकले, हल्के हाथों के साथ उसको खेला और जब तक डीप पॉइंट से खिलाड़ी आकर के गेंद को फील्ड करते, सिंगल मिल गया यहाँ पर। इस अंतिम गेंद पर ओवर की समाप्ति, 15 समाप्ति, 110 पे 5, 59 चाहिए 30 गेंदों से। 11.86 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं टीम को। ये 19वां मुकाबला जेके सुपर सीमेंट प्रीमियर लीग 2025 वर्ष, दूसरा एडिशन, प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। जेके स्पोर्ट्स टाइम प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांप और एमएचएम फैशन पीस एंथम स्पोर्ट्स इंडिया जस्ट बुखारा, हमदान हो रही है डेलीगेट स्पोर्ट्स क्लब और उसके अलावा एचएनडी और वैली फ्रेश गोल्ड। थैंक यू स्पॉन्सर्स, व्यूवर्स, जितने भी श्रोता हमारे साथ हैं, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से अपना समर्थन सहयोग देते रहिए। जेके स्पोर्ट्स टाइम आने वाले समय में बहुत सारा क्रिकेट लेकर के आ रहा है आपके लिए और आप एंजॉय कर सकते हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम यूट्यूब और ऑफिशियल फेसबुक। और उसके अलावा आप प्ले स्टोर पर जाकर के जेके स्पोर्ट्स टाइम ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और निश्चित तौर पे हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, एक अंक बन सकते हैं। चलिए 110 पे 5, 15 समाप्त, 30 गेंदें, 59 रनों की आवश्यकता। क्या कुछ होने वाला इस मुकाबले में, इस संघर्षपूर्ण
ये रोमांचक स्थिति, ये कांटे की टक्कर, ये गेंद और बल्ले के बीच संघर्ष निश्चित तौर पे अभी भी बना हुआ। इम्तियाज लेफ्टी, आखिरी ओवर अपने कोटे का, 3 ओवर 14 रन। वो अनुशासन, वो पैनापन, वो किफायतीपन, वो कसी हुई गेंदबाजी, आखिरी ओवर लेकर के तैयार। 16 ओवर पारी का, 15 के बाद 110, 59 चाहिए 30 गेंदों से। पहली गेंद को पुल किया खूबसूरती के साथ और गेंद वहां छिटकी, पर दूसरे प्रयास में हालांकि स्थिति वापस लौटना पड़ेगा। केवल 1 रन जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को, 1 रन और साझेदार के खाते में 2 पर पहुंच गए। सजाद गनाई सामने होंगे। नेल्सन स्कोरबोर्ड पे 111, 111 पे 5, 58 चाहिए। 29 गेंदें अभी भी शेष हैं इस मैच में। जीडी टाइटंस और द रियल सुल्तान समरबुक के लिए ये भिड़ंत, कांटे की टक्कर और निश्चित तौर पे डू और डाई की सिचुएशन। इस बार सामने सीधे बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात। जब तक वे गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, 2 रन और दोनों बल्लेबाजों ने जोड़ लिए और 2 रनों के साथ रन संख्या 113 पे 5। और यहां 28 गेंदों से 56 रनों की आवश्यकता, 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से। सजाद गनाई सामने 3 पे। 16वां ओवर, 4 गेंदें शेष इस ओवर में, 113 पे 5। लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, उसके अलावा डीप मिड विकेट और डीप पॉइंट पे एक खिलाड़ी। अगली गेंद इस बार खेलने का प्रयास, सफलता नहीं मिली। डॉट से बचना होगा, सिंगल डबल से स्ट्राइक और रोटेट करना जरूरी। विकेट कीपर के अलावा एक पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, कवर दायरे के अंदर। शानदार फील्डिंग, 56-27 गेंदों से 113 पे 5, 15.3 ओवर की गेंदबाजी। इम्तियाज लेफ्टी। अगली गेंद इस बार ऑन साइड में एक सिंगल जरूर मिल जाएगा। मिड विकेट के खिलाड़ी ने गेंद को आकर के फील्ड तो किया जरूर, पर रन संख्या में वृद्धि होती हुई 114 पे 5। 1, 2, 3 और 1, 4 रन आ चुके हैं 4 गेंदों से। 26 गेंदों से 55 रनों की आवश्यकता। द रियल सुल्तान समरबुक चिंतित जरूर, उनका डगआउट, पर क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। जब तक ना आखिरी गेंद फेंकी जाए आप अनुमान नहीं लगा सकते, पर परिस्थितियां थोड़ी हित में जीडी टाइटंस के, क्योंकि शिकंजा कसा है। पिछले 2 ओवर्स की अगर हम बात करें तो 3 विकेट आए हैं और वहां से कहानी में बदलाव आया है। अगली गेंद और इस बार फिर नीचे रहती हुई गेंद, एक बार फिर रन नहीं मिला। हालांकि स्टंप्स बिखेरे जरूर, वो गिल्लियां बिखेरी जरूर विकेट कीपर ने, पर कोई क्षति नहीं, रन गति में कोई वृद्धि नहीं। 25 गेंदों से 55, दिलचस्प मुकाबला, 5 विकेट सुरक्षित। इम्तियाज लेफ्टी का ये ओवर बहुत बढ़िया गया है, बड़े स्ट्रोक्स आए नहीं है, सुरक्षित पिछला पाँव, ऐसे में कोई क्षति नहीं, रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। 55 चाहिए 25 गेंदों से 114 पे 5, 15.5। अंतिम गेंद सामने साझेदार, इस बार कनेक्शन मिल गया और गेंद गई एक टिप्पे के बाद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। अंतिम गेंद पर आया चौका, 16 समाप्त 118 पे 5। और अब जाकर के 51 चाहिए 24 गेंदों से। Important boundary, much needed for Sajid and the real Sultan Samarbug. He bowled it wide up the off, trying to keep it wide up the batter, but he slashed it and gets important boundary. 51 away from 24 balls. Imtiaz lefty, 4 overs 22. Shade over 7 and over. That's the economy. Economic. Imtiaz lefty. Stingy. Not going for runs of his 4 overs. 118 for 5. 51 away from 24 balls. Raza has got the ball. 24 balls, 51 away. Who will win? And which side is going to make it to the quarterfinals tonight here at JK Super Cement? Red Premier League Season 2 presented by Atwas Retail. Atwas with confidence. Real Sultan Samarbug and Global Dadoo Titans in a must-win clash. Fighting it out. Game isn't over yet. It isn't done yet. We are into the over number 17. 1, 2, 3, 4, 5 men on the off. Just 5 and 5-4. This is the field composition, and he's going to continue with a fresh over. 2 overs, none for 27. Sajad Ganai on strike.
Pressure first ball. Quality shot. Needed that. That's going to be runs. 4 of them. A boundary of the first ball. This is going to cut short into 47 now. 4 runs knocked off the target. 47 needed from 23. Fresh over first ball. And what a shot of the bat of Sajjad Ganai. Up the back foot. Makes room. Gets it through. And no chance for the man at sweeper of cover boundary. 47 away. 23 balls. First ball 4. Araza gone for 31. The second ball. This one hit hard again. But that one gone straight to the field. The fieldsman there. He picks it up. 5 of 2 balls in this over. 46 to get from 22 balls. The asking rate is 12.55 over. Sajjad is also capable. He's on 6 of 4 balls. Sajjad 9 of 6. Little buzz around the center. RJ Rafiq has got that energy. The level is going up. This time, that's aerial. That's uppish. And that is taken at long on. Got the elevation on the distance. That's gone aerial. He's taken it long on. He can't believe. He's in a deep shock. Look at the batter. He thought that's gone all the way into the night sky. But the man at long on takes it with ease. Look, he stays calm and waited for the ball to come in right in front of their dugout. It's 1 more wicket down, and Wasim Raza has picked up important wicket of Sajjad, who's known as big hitter, pinch hitter of the team. He goes, and that brings Vijan Panchal. Now the Panchal comes in at number 8. This is a massive one. Big and bigger. And someone need to be there. The man of big stages. This is Sajjad Ganai. He's still there. I still remember that knock in Crewe area few years back. Oh, that was awesome and incredible. He has to come up with that kind of an innings here. 21 balls, 46 away. A required rate gone up to 13.14 and over. And look at the real Sultan SumerbughvsGlobal team. Despair, sadness is over there. Has it gone in the air? Even I thought this will go all the way. But there was only elevation, not the distance. 46 needed from 21. Raza is among the wickets. He conceded 32 of his 2.3. Expensive, but effective when he needed to be right on money. He got rid of Sajid. Vijan on strike. Vijan throws his bat at it in the gap. But fielder does well. He gets around in time. Just a single, and Sajjad Ganai is on strike now. 45 from 20 balls. Anything aerial? Crowd is on their toes. And look at the excitement. And they are still here. They don't want to leave the center. Wave of a hand from this young lad. But he is there. He's enjoying the moments of game here. 45 to get from 20 balls. This over 6 runs coming. That one it says low on that occasion. That was a quicker one from Wasim Raza as he chipped in with a dot. Another important dot. 19 balls. 45 needed to prevail. 124 for 6. Sajjad on to 9 of 7. That one. Is it taken? Unbelievable global. Imtiaz lefty, the man. Look at his right hand. It was out like that. He's in a deep hand, but he's celebrating this. He decided to take that one. He pounced onto it. The second one for Raza in this over. The real Sultan SumerbughvsGlobal sinking further. Take a look again. He punched it. But what a global. Wasn't easy. It was travelling. But Imtiaz lefty. What an all-rounder. Contribute with the bat. With the ball picking. Given away just 22. Now on the field. He's rock solid there. And stands as a wall. Look at that global. Never easy. Incredible one. Tonight. In a must-win clash. And Sajjad is going back to pavilion. Look at his face. The sadness is around there.
And you can look at his face. It's a helplessness over there in the dugout. Complete despair. Tensed moments. Nervy chase. And that brings Amir Sofi now. 45 needed from 3 overs. They need one big over here. The remaining 3 overs. .45 to get. Conversation is going on. Bell, Imtiaz, Wickets, Goni having a word. Which one will operate? 18 balls, 45 needed. Gawar Rashid is warming up. Is he going to bowl that 18th over? Looks like he's ready. Yes, he's in readiness. He's warming up a bit. He's getting ready to operate that 18th over. Vikas is having a word. Vikas telling him, you have to be on money. We can't take any risk here. Behind square on the up there is Samir Bell. They're finding their voices back. They're breathing again. Coming back to life. At one stage they were stunned by Nasir Ghanai for a while. That brisk knock comes to an end. Now they are 7 down. Pressure, first ball. Vijan on strike. The first ball, Vijan swings. It's in the air. Who will get to the ball? And Gawar Rashid makes it to the ball. Can you believe? I can't believe. It is catch of the night. Catch of the match. This is Jaga Sports Time bringing you the exclusive from iconic Queen of Bakshi Stadium. Everyone around the country is stunned. What a catch. Absolute blind, a stunner. What was that? Bird flying in air, making it to the ball. I can't believe. But that is the reality. Look at that one again. What an athlete he is. Such a wonderful character. Incredible, unbelievable, amazing and remarkable. What a global. Wasim Raza, all delighted. Raza says, oh come on, you made it to the ball. Even I am stunned here in the com box. Nazir, if you're asked to explain the catch, what are going to be your words? Any two-liner right in your mind? देखिए जिस प्रकार का ये कैच लपका और निश्चित तौर पे जब आप प्रयास करते हैं ना तो फिर सफलता जरूर मिलती है और तलाश में जरूर इस जीत को और कहा जाता है ना कि बहुत कोशिश में करता हूं अंधेरे खत्म हो लेकिन बहुत कोशिश में करता हूं अंधेरे खत्म हो लेकिन कहीं जुगनू नहीं मिलता कहीं पे चांद अधूरा है और कमाल की ये फील्डिंग कमाल की ये गेंदबाजी कमाल का ये कैच लपका है गौहर रशीद ने और 124 पे 8 सीमित कर दिया 17.1 ओवर की गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट शानदार क्रिकेट और दर्शकों को मजा आ गया होगा आज की रात इस मुकाबले को देख करके इस बार सामने खेला है उमर आलम आए नए बल्लेबाज आमिर सोफी के साथ सिंगल मिल जाएगा 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ 125 60 विकेट पे 45-17 गेंदों से और यहां सिंगल तो 16 गेंदों से 44 125 पे 8 17.2 ओवर की गेंदबाजी सोफी होंगे सामने और क्या आमिर सोफी कुछ बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे अपनी बल्लेबाजी से क्या कुछ चमत्कार कर पाएंगे यह देखना होगा क्योंकि इसके बाद अंतिम बल्लेबाज का आना बाकी तो कहीं ना कहीं वो उम्मीदें वो उम्मीद की किरण वो आशाएं अब कहीं ना कहीं डूबती हुई नजर आ रही हैं सामने खेला बॉलर के दिशा में अपने फॉलो थ्रू में फील्ड कर लिया गौहर रशीद ने यह आखिरी ओवर है उनका गेंदबाजी विश्लेषण पर जरा नजर दौड़ाएं 3.3 ओवर 13 रन और 2 विकेट कमाल की गेंदबाजी और ये जो कैच लपका उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सर की याद दिला दी बहुत ही बेहतरीन कैच गौहर रशीद ने लपका 125 पे 8 17.3 के बाद आमिर सोफी शून्य पे एक गेंद का सामना किया 44 चाहिए 15 गेंदों से गौहर रशीद आमिर सोफी के लिए नॉर्दर्न पवेलियन एंड से
44 की आवश्यकता 15 गेंदों से। इस बार इनसाइड आउट खूबसूरती के साथ गेंद एक टिप्पे के बाद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए 129 पे 8 रन संख्या इस चौके के साथ ही। आमिर सोफी के बल्ले से निकलने वाला ये चौका, खूबसूरत, शानदार, बेहतरीन स्ट्रोक, 1 बाउंस इनटू द फेंस। चौका मिलता हुआ 4 और खाते में। रन संख्या में वृद्धि होती हुई रन संख्या पहुंच चुकी है 129 पे। 40 चाहिए 14 गेंदों से। ओवर से आए हैं 5, विकेट भी मिला है और अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी गौहर रशीद के इस ओवर में। आमिर सोफी सामने, 2 बड़े स्ट्रोक चाहिए इन अंतिम 2 गेंदों में। आमिर सोफी तलाशेंगे जरूर। हम साइड में दौड़ करके रन पूरा किया, सिंगल मिल जाएगा। 1 रन और 130 पे 8। 39 चाहिए 13 गेंदों से। जीडी टाइटंस के विरुद्ध रियल सुल्तान समरबुग को करो या मरो की स्थिति इस मैच में। डू और डाई की सिचुएशन पर यहां पलड़ा इस समय बारी टीम जीडी टाइटंस का। हालांकि क्रिकेट में अनिश्चितताओं का खेल है, पर देखना होगा आखिरी 13 गेंदें। 130 पे 8, 39 रनों की आवश्यकता। अंतिम गेंद लेकर के गौहर रशीद, उमर आलम सामने 1 पे। गौहर रशीद चले उमर आलम के लिए। 130 पे 8, 17.5 के बाद। इस बार फिर लॉन्ग ऑन की ओर खेला है, पर पीछे फील्डर है वसीम रजा, सफाई के साथ गेंद को फील्ड कर लिए। अंतिम गेंद पर रन आया, ओवर की हो गई समाप्ति। 131 पे 8, 12 गेंदों से 38 चाहिए। 2 overs, 38 to get. And we saw 8 of them going back to pavilion. It's down to the remaining 2. There is Ahmed Sofi and he's got Umar Alam in the middle. That catch will be remembered. Catch of the tournament. People calling it by different names. They have different titles for that one. But that catch, that was splendid. That was breathtaking. The one that stunned everyone here. A catch that was of next level. And one can see that the love for the game, the excitement they're bringing into the game. Gauhar Rashid, known as Gaffu in the Stee, plucked it from thin air and from nowhere. Incredible catching. It's down to the 19th over now. 12 balls, 38 to get. Wasim Raza to bowl. Omar Alam on strike. He stamped on a very first ball. He was well down the track trying to heave it to a long on. And wicketkeeper Sarshil Abbas makes no mistake. He whipped up the bails in no time. He can't look back and captain is gone. He's walking off the field. Umar Alam, he's on his way. He's going to walk back to the pavilion. It's wicket number 9 down. Captain departs. You can see that helplessness, sadness. He can't hold on to his nerves here. Didn't hold his nerve. One can feel that as a captain of the pack, left with no other choice, and he decided to go at it, and is caught well short of his crease there. It was the wicketkeeper who got better off the batter in the end. 131 for 9. Last man, Yashjeet, is in number 11. 11 balls, they're 38 behind. Yash decided to go at it. Good looking shot. Wide of the man. Will just be one. 37 to get from 10 balls. As it's down to Amir Sofi now. He's gonna be on strike here. Amir Sofi to face the likes of Wasim Raza. 3.2, 3 for 4, 3 for 34. He has picked up 3 wickets. They're 37 behind. Sofi trying to sweep the ball, misread it completely. It's a dot delivery. Down to 8.
8 balls, 37 to get. I think Sophie is trying to fetch 1 or 2 boundaries here. That's why he tried to go for the sweep shot. Now once again, doesn't time it. Didn't middle it properly. 7 balls, 37 away. I think score ticker isn't working properly at the moment. So you have to bear with us. It isn't our fault. It is a technical snag that our app Crick Heroes is facing at the moment. It's taking little time to update. So don't be in a rush. Try to hold on your nerves. 7 balls, 36 to get. And look at that effort by Irfan Mir. Puts in a slide to stop the ball and sabre 3 runs. Yesh to face the final ball from Raza. As he decided to go at it, it's aerial, it's past to the man at cover. It's into the stands. That's 6 to end the over, number 19 on a high. Good finish turnover here. We're done with the 19th one. May I remind you, I'm early telling you because our score ticker is a bit late. So bear with me. Don't be in a rush. So that 6 will end the over, number 19 on a high. They need 30 from 6 balls. They need 30 from 6 balls. 6 sixes or 5 sixes will make it. 5 sixes. And they have 6 balls at their disposal. What they can do now? Will Amir Sophie do wonders with the bat? That is going to be the wondrous sight. Who's going to bowl that final over here? Will it be thunderous strike from the bowler? Will the batter find a better way to make the ball fly? 6 balls, 30 to get. One 3-9 for 9. 1-3-9 for the loss of 9. 1 wicket. The last wicket is in. A wicket here will mean Global Dadoo Titans are over the line. Amir Sophie need 5 sixes to take his side over the line, to walk away with 2 invaluable points and a key to unlock that Super 8 berth. As we watch once again, Vikas is getting ready to operate. He's got the ball in his hand to operate in the final over. Amir Sophie on strike. First ball of fresh over. That's the 20th over. First ball goes aerial. And it's gone for 6. Man at Kokana parries it into the boundary. First ball 6. They need 4 sixes from 5 balls. First ball gone for runs. 6 of them. पहली गेंद पर छक्का और अब जाकर के 24 रनों की आवश्यकता 5 गेंदों से। क्या चमत्कार कर पाएंगे आमिर सोफी, देखना होगा। आखिरी जोड़ी बीच मैदान में और आखिरी ओवर भी 5 गेंदों का आना बाकी। क्या कुछ होने वाला है? क्या यहाँ इतिहास रच पाएंगे? क्या कीमतीमान रच पाएंगे? ये देखना होगा। पहली गेंद पर छक्का आमिर सोफी के बल्ले से। वहां फील्डर तैनात थे, कैच लपकने का प्रयास, पहुंच से दूर और गेंद सीधे बॉर्डर लाइन से बाहर। पहली गेंद पर छक्का और अब चाहिए 24 5 गेंदों से। 145 पे 9। 19.1 ओवर की गेंदबाजी। आमिर सोफी 12 पे 7 गेंदों से। अगली गेंद लेकर के विकास सिंह। दूसरी गेंद ओवर की 5 से 24। धीमी गति की गेंद, डॉट गेंद और ये थ्रो रनआउट का अवसर था जरूर, स्टंप्स पे नहीं लगा और सिंगल पूरा कर लिया यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने। और अब जाकर के 4 गेंदों से 23 रनों की आवश्यकता। निश्चित तौर पे ये चुनौती जरूर और आसान परिस्थिति नहीं है। 23 needed from 4 balls. Thank you, Nazir. He's helping me out here. He's doing a wonderful job. Thank you very much. It's down to 23 from 4 balls. Each and every ball carries a weight and worth. Every ball is going to be important. First ball gone for 6. Second ball yielded a leg by. Ball number 3.
Yashjeet on strike. Banger in shot. Didn't middle it properly. Yes says, let me take charge. 3 balls remaining. Vikas banger in shot and it's one for the over signalled and warned by the umpire. You can't bowl the next one. You're done with the coat off. Had high deliveries. Oh, look at that one. It hits him on the grill. Luckily, he has put on helmet. Yash is getting ready to face the next one. Is he going to come up with a big shot here? Vikas having a word with Yash. Yash says, I'm fine. I'm okay. You may go back. And he's back to his run up again. He's back to the top of his mark again. 3 balls, 23 needed. As he comes charging in again. With ball number 4. Yash inside the line is played on. Dragged on. He's gone. And with that, Global Dadoo Titans are through to the quarterfinals of JK Super Cement Red Premier League presented by Athwas Retail, Athwas with confidence. They prevail by 22 runs. Ecstasy and ecstatic moments for their club and complete despair, sadness in the Real Sultan Summerbugh camp. With this message, I, Munawar Tanveer, alongside my colleague and counterpart Sheikh Nazir, taking you back to the studios of JK Sports Time. With this message, tomorrow we have just one game coming up. That's going to be the underlights game, day-night encounter. Sultan versus Baramulla taking on Sopor Stallions. One final time in the league round robin stage. Till then, Assalamu alaikum, Tata, bye-bye, Idio and Fi Aman Allah.